वो आग वाली ऐड. Hello, welcome to all my dear students. Welcome. So I hope you have completed your shift to JEE Mains examination, the final and the last paper on the last day, and I hope you are feeling relaxed and happy. So today we are going to have the paper analysis of shift to Jan 29th. So I hope all the students, hello, namaste, and I hope Ankur, everyone, so you have written your examination properly. So today, as usual and regular daily, we will be having a paper discussion. Today also we will have a paper discussion of mathematics, physics and chemistry. Soonly and shortly I welcome my friend Akshay Arora, mathematics faculty. Hello everyone, I hope you all are doing good. Very good evening to all of you. Today is the last day and yes, we are very excited because we will be giving you the analysis at the end of the session that what happened in the JEE Mains 2025 and session 1. So session 2 will be having in a month of April and we will be there with you throughout these 2 months to help you out to boost your score from the JEE Mains session 1 to session 2. And fast all of you all. And we expect, sir, at least for every student who attended our live session, we'll be giving them the support in the Telegram group. Yes. And they will be able to boost their scores by at least 50 marks, sir. Yes. So all those who are getting 150 in the session 1, we as our team of Infinity Learn and Sri Chaitanya will help you out in getting this score, in boosting this score from 150 to 200. At least there will be a jump of 200 marks. And all the teachers here are with you all. Okay. Yes. And here we can see you are having a rank predictor link. Everyone, you can open the link and immediately put the inputs, your name, details, and immediately you will get an idea about your rank, your state, the course, your details, everything you are going to get. So please click the link and please download the predictor app and immediately put your details and get it soon. And very soon we are getting mathematics, physics and chemistry questions from different students, memory based, and we are going to discuss. Please tell me what is the difficulty level of your question. Fast put your inputs over there. Was it easy, moderate or difficult? Easy, moderate or difficult? Shift to what is your opinion? Everyone tell me. 270 आया तो next session 320. ओके ओके आ सकता है, नहीं वो देखेंगे. चलो ठीक है, अगर आप 270 पे ऑलरेडी बैठे हैं, so we'll be giving you a hype of 5%, 6%, and you may also get 300 score, 300 out of 300. And obviously, my dear students, getting 300 out of 300 is a big thing. Okay, so if you have a score of 270, definitely will help you out to get this rise of 10%. And those students who have not performed well in the January session, maybe there are some group of students who were not prepared, they were busy in their pre-boards or boards examination, practical examination, etc., and they are unable to get proper marks and they are not well prepared. So don't get afraid, don't be fearful, be cool, be relaxed, because you are having a second opportunity in April session. You can excel well. For that you can join our Infinity Learn courses
which will be details will be available in the description, or you can contact Infinity Learn, and we will allow you, and we will see that you excel in the April 2025 JEE main session also, or we'll give a proper planning. Yeah, right now there are about 100 students live watching now. So I request all of you kindly like this video, and if you are not the subscriber of this channel, please subscribe it. Moreover, sir, I have prepared poetry for the students to actually help them feel motivated throughout. One second, sir. One second. Some students are coming here and telling, sir, speak in Telugu and speak in Hindi. So for Hindi people, sir will give one poem, okay, so that Hindi people will become happy. Okay, and for Telugu, I cannot speak Telugu. Na Telugu chala weak undi. Okay, so I cannot speak in Telugu, but we'll request some Telugu sir to speak some Telugu so that you will get motivated. Okay, yeah, so please continue, sir. Yeah, we'll start the question discussion once we have the question. So few sets of the question we have, and yeah, let's begin. So I have prepared a poetry for you. Like, this is not my poetry, but I'm giving my voice to it. Irshad. Thank you so much, sir. So लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है. लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है. सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है. सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निकलता है. सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा. नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा. हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी. हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी. बीच में भूल भी जाता हूं सर. शायर साहब शायरी भूल गए हैं थोड़ी. हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा. हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, whatever the score you are getting in the session 1, do not get demotivated. We are here with you to help you out to boost your score in the session 2 of the JEE Mains. And believe me, my dear students, if you are here at Sri Chaitanya and Infinity Learn, so definitely you will be having a good amount of the score being boosted. So we will be explaining you about the booster score like batches we already have launched for the JEE Mains as well as for the JEE Advanced. We'll be giving you a quick information about that. And so, sir, Akshay sir, very I soon think we'll be coming with a memory base as well as the analysis also, sir. Questions are coming, sir. Yeah. Questions are joining. So all the students, I'll go immediately and get the questions. Akshay sir, you can get the please discuss the analysis with chemistry questions. I'm coming back because students are obviously worried about their marks and worried about their questions. Have they attempted it properly or not? So dear students, based upon memory, maybe sometimes the question may go wrong. Sometimes the answer may go wrong, because answer may not go wrong, but questions may be different, or it may not have been happened in the examination, because students like you only give us the questions and we discuss here on the screen. So Akshay sir, you please continue. Yeah, I'll be back by the chemistry questions. Till then, have a nice day. All right, my dear students. So today was the last session of the JEE Mains 2025. This is the last day, guys, and we have got a lot of learnings from all the 3 subjects, guys. As far as the past experience is being concerned, in the January month, please pay attention, my dear student. Do not spam the comment section. It is very important thing that I am going to discuss with you, because this is the last day. We have got an experience of all the shifts of the JEE Mains 2025. And now since we have got the experience of giving the examination, so we know how the questions are coming. What is the level of the questions being asked in the JEE Mains? Based on that, guys, we can bring out a conclusion or the inferences that what is going to happen in the April month. So it is very serious discussion being going on. Today's session will be very important as we will be concluding all the shifts, like what is happening in the month of April based on the experiences that we have from the month of January. So all those students who want to boost their score, guys, this session will be very important for you. So 2 things we'll be taking care in this particular session. The very first is I'll discuss with you the memory based questions of physics, chemistry and math in the last shift that has been attempted, just like the students has got out from the center at 6:15, and we have got few questions and our team is typing those questions. Very soon teachers will be taking those questions and we'll be giving the solutions of those questions. Okay. Secondly, we'll give you an analysis based on the experiences that we have from the last few shifts. Okay, so in the session 1, in the January attempt of the JEE Mains 2025, what is the experience that we have got from the questions from the chapter, which chapter is very important,
which chapter is being frequently asked, what are the new set of the problems which are not being asked in the previous few years, but they are included in this year. So all this type of the analysis will be given to you at the end of session today. So stay tuned to this session, guys. I can see right now there are 100 students in the class. They're watching this session live. I want you to please share this link to all the students, whether they have attempted the JEE Main today or they haven't attempted, because this session will be very important for the next April attempt. We have to plan now so as to get good score in the April month. Okay, so the more you plan wisely, the more outcome you can expect in the month of April. Okay, so guys, this is a quick analysis of what happened in the shift 2 of the 29th January. About the mathematics, I'll say there were 5 questions which were easy, moderate, 4 moderate but lengthy. Many of the students, they said that the maths portion is lengthy, guys. Why it seems to be lengthy? Because you're choosing those questions first which consumes time. So if you are choosing in the round 1, if you're choosing questions which take around 5 minutes of your time or 8 minutes of your time and actually attempting one question, so you'll be getting demotivated. So my dear students, first of all, go through the runway to actually see how the questions are being asked. Attempt those questions which consumes around 2 minutes or maximum 3 minutes in the round 1. In the round 2, take those questions which you find that you are attempting for the first time. Like many of the questions, you'll find that you're having the past experiences of those type of the questions. Okay, if you have the past experience with any of the concept of the question, so attempt it in the round 1. Else, if you're finding the question to be new and you're finding that I have to attempt, then only I'll be able to know that whether I'll be able to attempt it or not. So attempt those type of the questions in the round 2. Okay, so yeah, Shivnath, please do not spam beta. And the important part is, how was the paper today? I'm discussing about the maths. This is a difficult, easy and moderate. Percentage is being given according to the memory based questions that we have got. This distribution is very important, guys. I always put like emphasis. I always put emphasis on the unit wise distribution and its weightage. So the more weighted chapter has to be given importance while you learn. Okay, so if you see that if there is a question like in the chemistry, I know yesterday I saw 12% or 13% was there from the general organic chemistry. So if you know that this much percent of the paper is coming from the organic chemistry, general organic chemistry, so you have to put the emphasis on those topics first. Okay, so here also you can see the weighted distribution being given along the topics, and I can see that vectors and 3D are really very important, and the questions are also been coming very easy as per the syllabus, because you can see that the portion of the concepts being deleted also in the last year. So based on that, the questions from the vectors and 3D are found to be easier in comparison to the year 2023. Okay, if you see the chemistry, so this is the amount of the questions: easy, moderate but lengthy, difficult and very difficult. And this is a chart, pie chart, which will help you to analyze quickly what happened with the difficult, like what is the percentage of the difficult questions, easy questions and moderate questions. This is the quick analysis of the weighted distribution, that which chapter carries more weightage and which chapter carries less weightage. So basics of organic chemistry, as I told you, that it is 10.33%, and yeah, it is very important for all of you, because if you do, you're able to achieve 10% of the marks. Around 5 to 6 questions are being asked from the GOC. All right, and this is the chapter wise distribution of the chemistry. If I say about the physics paper, so this is the distribution about easy, moderate but lengthy. In physics also, the students find in the shift 1 and in the past few shifts, the students find that the paper was easy of the physics. Chemistry also they said easy, but for maths they said it was quite lengthy. So anyhow, we are getting reviews from the students that the students are consuming more than 1 hour in attempting the maths maths questions. Okay, so how you will be able to manage more than 1 hour? So you have to save the time from the chemistry subject, you have to save the time from physics subject, you have to complete chemistry early, you have to complete physics early, so that the remaining time you can spend in the math subject. This is how the strategy works, and this strategy will only be adopted, like you will be getting experience once you attempt the mock test. So at Infinity Learn platform, we have the paper predicted mock test. Okay, just before the examination, before 1 month, before 2 months, we are actually giving you various tests which are the paper predictor test, where you can actually examine yourself that where do you stand, and you can experiment with those tests. Like you start with maths first,
then you go to the physics, then you go to the chemistry. So while you are writing the JEE Mains in the April attempt, that will not be your first experience of getting through the JEE Mains examination, because at Infinity Learn, you have already attempted those mock tests, those series of mock tests, I'll say, and with the help of those mock tests, you'll get an experience how to attempt the JEE Mains. Okay, so many of our students who are actually the part of the Infinity Learn and Sri Chaitanya, according to them, they experienced that on the day of JEE Mains, like nothing was new to them. The paper seems to be as similar as being asked in the test series, the final test series, All India test series of the Infinity Learn. So I request everyone, whether you are the part of any coaching institute or you're not the part of any other coaching institute, just join the test series of Infinity Learn. This is highly recommended. And if you want to join the booster sessions, you're weak with any of the concepts, okay, in maths, physics and chemistry, so there is a course of booster batch that also you can join. Okay, I'm not boasting you anything, I'm not putting a pressure on you, but yeah, I'm telling you the importance of giving the test. Once you give 20, 25, 30 tests before the JEE Mains, so JEE Mains would be similar to those test series, no? So that is why, guys, it will be very helpful for you. Okay, and on the day of JEE, you won't be getting hesitant, you won't be getting you won't be getting scared with the paper. Okay, so everything will be as usual with you. So yeah, we have with us Sarfraz sir. He's back with the questions, and yeah, today we'll be starting with the very first discussion of the questions from the chemistry. So yeah, thank you, Akshay sir. Thank you so you much. You have given beautiful and great inputs. Thank you, sir. Especially I liked your shairi. Okay. Thank you. Right. चलो. Okay, students. ठीक है. बच्चों discussion start करेंगे. Right. तो ये and where is it? Mr. Bhaskar. Mr. Bhaskar is our. Where is the questions? Okay. Mr. Bhaskar. Questions are not visible. 1 second, dear students. Is it different slide? 1 second, please, dear students. 1 second. Paper discussion starting. So, questions are not there, no, sir? Yes. Okay, nothing will happen. Just give 2 minutes. Okay. Oh, Mr. R, one of our team member, Mr. Bhaskar is going to put questions. Okay, very soon and shortly. So, meanwhile, okay. Meanwhile, I would like to say you that the paper was moderate. Just give me 30-40 seconds time, dear students. Jal se jal questions aane wale. Aage questions already came. They are just in pipeline. Just in 30 seconds, we'll start the paper discussion. Okay. Just please, Bhaskar sir, please help. Okay. 1 second, dear students. Yeah. So Bhaskar is one of our team leader who is helping us to get the questions. Thank you very much, sir. So dear students, patiently wait till our sir completes the process. Okay. Okay. So meanwhile, dear students, I would like to say that questions came very beautiful and simple in organic chemistry. 140 enough to qualify means how can I tell? It depends upon the category of the ranking, in which category you have been you are talking about. But if you speak about general, qualify will happen. 140 qualification is enough, but आपको सीट मिलने के लिए थोड़ा सा अच्छा रैंक चाहिए, है ना? चलो बहुत अच्छे, थैंक यू. Right, so all the students, so did this question came in your exam? Everyone please reply to me, because sometimes what is happening, sometimes what is happening, students are saying, sir, this question didn't came, wrong question, they are telling. So better tell this question appeared in the exam. Which of the following compounds, compound will form the most stable carbocation? Right? So, dear students, this compound, if you see, this will become PH3C plus if bromine is lost, first one. Second compound, if you see, that will become PHCH2 plus benzyl cation after the loss of bromine. The third will become C6
C6H5 is phenyl only, same meaning only. So it is PH, CH, CH3, and this is plus. And the fourth one is the butyl, 1, 2, 3, 4, butyl cation. So everybody please tell me what is the correct answer. हिंदी में बोलूं तो क्वेश्चन क्या था बताओ, कि क्वेश्चन ये था कि स्टेबल कार्बोकैटायन क्या है, कौन है. तो everybody can see in this you have highest resonance, yes or no? Here you have highest resonance. Are you following? Hence the answer is option 1. But if you want to draw the structure of it, then if I draw the structure and show you and present you, then you can see that this is the actual structure. Okay, it is the actual structure, right, where you got plus. Okay, so this compound is actually this one, and you can see lot of resonance is there. So actually directly we can answer, no issue, but this is also the way to answer. Okay, so directly we can answer from here only, but I have just given a explanation to you. Okay, right. Next, number of sigma and pi bonds present in the given compound is asking in hex 1 in 4 ine. So 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, and this is 6. Right? Everyone correct? Hex 1 in. So 1 in 4 ine. 1, 2, 3, 4. 4 ine. Right? 1. Right? So everybody can see as per the UPC, this is 1, 2, 3, and this is 4, this is 5, and this is 6. So now got it? Everyone got it? Now coming to filling the hydrogens. So here hydrogens you can do filling. Here 3 hydrogen comes. Here no hydrogens. Here only 2 hydrogens can appear. Here only 1 can appear, and here 2 can appear. Actually this is very easy question. It is very easy and cheap question. Only explanation it is taking time, but everybody can solve it very fast and no one can do it wrong. So everybody, if you count sigma bonds, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Right? So you got 13 sigma bonds. Let me count one more time. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Now coming to pi bonds, you can see 2, and here you have 3 pi bonds. Right? So everybody can see it is very simple and clear. Please give me thumbs up everyone. Very easy, very cheap, very local, very simple question. Even if you have very good foundation also, okay, in 11th grade also you can solve this question. It is not at all a hard question. Okay? Right. Okay, so now you can see, right? So, right, shall we go to next question? So, I think everybody have solved this correctly. So, we will go for the next question. The next question, did this question appear in exam or not? Please tell me. 0.41 gram of barium sulfate is obtained from 0.2 gram of organic compound in Carius method. What is the percentage of sulfur present in the organic compound? Did this question came in exam? Came, right? Question came in exam? Yeah. Okay, that's right. So I will open the calculator because I want to save time. Okay, I'll open the calculator, CAL calculator. Okay, I'm ready with the calculator. Right. So what is the question now? Tell me. 0.4 grams. So everybody know barium sulfate. Barium sulfate has sulfur. What is the molecular weight of barium sulfate? 233. So 233 grams will have 32 grams of sulfur, correct? And how much barium sulfate did you got? 0.41 will have S gram of sulfur, correct? Everyone got it? Oh, chemistry you are getting 286, very good. So what is X here? So I will use calculator. It is 0.41 into 32, right, divided by 233. So answer is coming somewhere around 0.056
is the answer, correct? 0.056 is the answer you are getting. Now this is the amount of sulfur. This is the first step. Now second step is what? Percentage. So percentage of sulfur is equal to weight of sulfur, correct, by weight of organic compound. How much? 0.2 into 100. So if I solve this exactly, then 1 second. So this is divided by 0.2, okay, into 100. So answer is coming approximately 28%. Answer is coming approximately 28%. Everyone, is it clear? 28% is the answer. Agree? How many of you got the same answer? 28%. 28%. ठीक है? चलो. Right? So it is very easy question, Carius method, and such model question appeared in 3 different shifts. It appeared. Right? Okay. So thank you, dear students. I will come back with some more. It asked mass. It asked percentage of sulfur means here. Answer was coming integer means he is saying nearest integer. No, here can you see nearest integer, right? Right. Mass means we can, percentage you can convert in mass. What is the problem? We can do that also, right? Okay. So thank you, dear students. So very soon our Anirudh sir, I welcome my physics colleague Anirudh sir, who will be taking your physics questions have appeared. Sirs will discuss physics paper. Sir, please continue, sir. Thank you so much, shortly sir. with the chemistry questions. Okay, thank you so much, sir. So we had a chemistry discussion. Now more questions are coming in. We are also getting questions today. Question rate as it is coming in. Let's have a few likes. क्योंकि आज जो बच्चे दे रहे हैं, इनका exam it's done, it's finished. Most people at this point throw the paper and like go home to celebrate. But there are still people out there who are providing the questions. So let's have a few likes. फॉर दोज पीपल. हमारी पूरी टीम है वहां पे कलेक्ट कर रही है. आप जैसे बच्चे एग्जाम देके वापस आ रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इन्फिनिटी लर्न जेई टेलीग्राम चैनल पे, वेयर यू कैन पुट इन योर क्वेश्चंस. तो उनके लिए लेट्स हैव अ फ्यू लाइक्स इफ यू हैव नॉट लाइक द वीडियो येट. चलो शुरू करते हैं हम. हाउ वाज द पेपर? अभिषेक, अभी तक जितने हमारे सवाल मिले, इट्स वेरी सिमिलर टू द मॉर्निंग शिफ्ट. मॉर्निंग शिफ्ट अगर आपने देखा है, मॉर्निंग शिफ्ट वाज अ फेयरली इजी शिफ्ट. तो उस टाइप का ही अभी तक वी हैव गॉट द क्वेश्चंस. सो आई हैव रवीना मैम आल्सो हियर विद मी. रवीना मैम, सुबह का पेपर के बेसिस पे आप बताइए कैसा है? सुबह के जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि सुबह का पेपर इजी पेपर था. अगर आपको फिजिक्स अच्छे से आती है, आपने अगर फिजिक्स के PYQs और क्वेश्चंस वगैरह सारे सॉल्व कर रखे हैं, तो आप इजीली फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे. तो अच्छा इजी पेपर था. एग्जैक्टली. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही मैम ने कि PYQ. सो इवन फॉर द नेक्स्ट सेशन, based on this year's pattern, based on 2025 pattern, PYQs in physics are becoming very very important. तो चलो बिना बातें और खींचे, लेट्स गेट इनटू द फ्यू क्वेश्चंस. तो मैम फर्स्ट क्वेश्चन है, आप करना चाहोगी ये? यस यस सर, गो अहेड. ओके. तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ. अगर किसी से आंसर आता है तो आप यहाँ पे कमेंट्स में बताएंगे. ओके ठीक है. और अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम किसी को कोई डिफिकल्टी आती है तो आप वो भी कमेंट्स में बताइए. ओके तो चलो सॉल्व करते हैं. ओके फिजिक्स हार्ड था. ओके ठीक है. चलो बाकी के हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे. अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हमें इजी लग रहा है. बाकी के क्वेश्चंस धीरे धीरे आ रहे हैं, तो उसके ऊपर हम फिर देखेंगे कि हार्ड था या फिर इजी था. ठीक है. ओके चलो फिर क्वेश्चन हमें क्या दिया था? अ सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग करंट 0.29 एम्पियर एंड हैविंग टोटल 200 टर्न्स. इफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज 2.9 into 10⁻⁴ टेस्ला, फाइंड लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड. अब देखो यार, ये ना बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था. अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है तो आप ये इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो अगर सोलेनॉइड हमें दिया हुआ हो तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? ये हमारे पास होती है μ0 Ni, और हमारे पास स्मॉल n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ओके तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हैं B = μ0 कैपिटल N डिवाइडेड बाई L इंटू आई. सो N हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ओके तो हमें यहाँ पे पूछा है कि लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, हमें कैपिटल L की वैल्यू निकालनी है. ओके इंटीजर्स में था ये क्वेश्चन. ओके कोई बात नहीं. ठीक है, देखो आपसे सॉल्व होना चाहिए. अगर आप ऑप्शन में भी अगर आप सॉल्व कर पाओगे तो भी ठीक है, इंटीजर में था तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है तो चलो अभी हम यहाँ पे लेंथ निकालेंगे. सो लेंथ हो जाएगा μ0 Ni डिवाइडेड बाई B. सो μ0 की वैल्यू क्या होती है? ये हमारे पास होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे दिए हैं 200
इंटू करंट यहाँ पे दिया हुआ है 0.9 एम्पियर डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड है 2.9 इंटू 10 की पावर -4। ओके, सो ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻²। ठीक है, सो यहाँ पे 2 -5 हो जाएगा ये इंटू 2 इंटू 29 को हम लिख सकते हैं 2.9 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 2.9 इंटू 10 की पावर -4। ओके, तो यहाँ से देखो 2.9 कैंसिल हो रहा है, ये हमारे पास हो जाएगा 8 पाई इंटू 10 की पावर -5 -1 इज -6, ये -4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +4, सो -6 + 4 इज -2। ओके, सो ये -2, तो ये हमारे पास लेंथ आई है मीटर में। हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे सेंटीमीटर्स में दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लेंथ होगी 8 पाई सेंटीमीटर। ओके, सो 8 पाई सेंटीमीटर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो जो भी बच्चे यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं, एक बार कमेंट्स में बताओ कि आपका ये ऑप्शन आ रहा है, और जिन्होंने भी जेई का पेपर दिया है आप भी बताओ कि आपने सही ऑप्शन टिक किया है वहाँ पे या नहीं। ठीक है, एक बार सभी कमेंट्स में बताएंगे कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर कोई डाउट आ रहा है तो भी बताइए। ठीक है, यस, थैंक यू मैम ये वाला सॉल्व करने के लिए। तो ये जो पार्ट है ना सोलेनॉइड वाला, ये पिछले शिफ्ट में कुछ खास आया नहीं था। काफी बच्चे पिछले दिन मैं जब ले रहा था तब बच्चे पूछ रहे थे कि सर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से नहीं आ रहा है। आया है थोड़ा बहुत, बट जितना होना चाहिए, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जितना हर साल आता है उतने नहीं मिले हैं। ठीक है, यस, काफी बच्चे बोल रहे हैं यस मैम सही आया सबका, कोई डाउट नहीं है, गुड गुड। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का भी आएगा अभिषेक, डोंट वरी। अपकमिंग फॉरवर्ड हमारे ढेर सारे सेशंस होने वाले हैं इस शिफ्ट को लेके, और साथ ही साथ अगले सेशन की भी तैयारी हम करने वाले हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगला सवाल देखो, 22 जैन शिफ्ट 2 का ये सवाल है। वहां पे थोड़ा सा लैंग्वेज बदला था, थोड़ी सी चीजें बदली थी, बट इट्स एग्जैक्टली दैट। यही कारण है हम हर दिन लाइव पेपर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जो सवाल एक शिफ्ट में आता है अगले शिफ्ट में वही आ जाता है, एंड देयर इज आल्सो हाई पॉसिबिलिटी कि सेकंड अटेम्प्ट में ही भी आएगा। तो चलो करते हैं इसको। पहले मेरे को एक कंफर्मेशन दो, ये सवाल आया था, कितने बच्चों ने आज दिया है? डिड दिस क्वेश्चन कम इन द एग्जाम? मेरे को उसका सबसे पहले एक कंफर्मेशन दो, कितने जितने बच्चों ने आज एग्जाम दिया है उनमें से। ठीक है, 223 NIT वरंगल CSE EWS में चांसेस है। चल जाओ 2:1, काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, काफी। यस, ऋषिराज आज दिया है, नेविगेटिंग लाइफ लेसन्स आज दिया है। तो ये सवाल आया था, ठीक है। तो चलो इसको करना क्या है, दिस इज बेस्ड ऑन द सिंपल कॉन्सेप्ट कि जब भी आप एक लेंस को बीच से काटते हो, इफ इट्स अ बाइकॉन्वेक्स, तब उसका फोकल लेंथ डबल हो जाता है, क्योंकि जब आपका दोनों सरफेस कर्व्ड है तब लाइट को वो ज्यादा बेंड करा पाता है, उसका पावर बढ़ जाता है। जब आपने काट दिया तो इसमें से एक प्लेनो कॉन्वेक्स बन गया। अब प्लेनो कॉन्वेक्स में अगर ओरिजिनल फोकल लेंथ इसका f था, तो अब इसका फोकल लेंथ हो जाएगा 2f, फोकल लेंथ इसका डबल हो जाता है। ठीक है, फोकल लेंथ इनका डबल हो गया। और इस केस में क्या है, इस केस में आपने बीच से काटा तो आप देखो ये दोनों सरफेस, जो सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी कारण से इसमें अगर फोकल लेंथ f था, इस इंडिविजुअल टुकड़े में भी फोकल लेंथ f ही रहेगा। फर्क इतना होगा कि इसका एपर्चर चेंज हो गया, तो ब्राइटनेस ऑफ द इमेज पे फर्क पड़ गया। ठीक है, एक और बार हम बता देते हैं, जब भी एक लेंस को आप बीच से काटते हो उसका फोकल लेंथ डबल हो जाता है। फोकल लेंथ क्या होता है कि कितना नजदीक वो टर्न करा पाए। अगर उसका दूसरा आपने प्लेनो कॉन्वेक्स कर दिया तो वो और दूर पे टर्न कराएगा, उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ इसका बढ़ जाता है, तो पावर हाफ हो जाएगा, फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। तो इसका 2f हो गया, इसका f हो गया, तो इसी को आई थिंक फोकल लेंथ ऑफ L1 ये वाला था, और L3 ये वाला पीस था, तो f/2f, तो L1/L3 f/2f काटो आप, आपका ऑप्शन डी 1/2 आएगा। काफी बच्चे 2:1 कर रहे थे। क्वेश्चन कहां पे गलत था? क्या ये L3/L1 था? L3/L1 था ये वाला? आई एम अज्यूमिंग ये L3/L1 था, क्योंकि काफी बच्चे ऑप्शन बी मार्क कर रहे हैं। Was this L3/L1? Manan is saying
करेक्ट आंसर 2:1। बच्चों को आंसर याद है। चलो अगर 2:1 है देन द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि ये वाला L3/L1 होगा। दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ठीक है, यस काफी लोग कंफर्म कर रहे हैं, महेंद्र, हेमंत, यस थैंक यू एवरीवन। तो तब ये आंसर हो जाएगा 2, L3/L1। सेम कॉन्सेप्ट है, L3 2F डिवाइडेड बाई F। ये सवाल आया था 22 जैन को भी। ऑलराइट, तो और भी ऐसे सवाल आ रहे हैं। आई थिंक नेक्स्ट हमारा मैथ्स आ गया है, तो मैथ्स सर आने वाले हैं वेरी सून। लेकिन उससे पहले जब तक मैथ्स सर आ रहे हैं थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अबाउट व्हाट द ओवरऑल शिफ्ट हैज बीन। ये जो हमने जो 5 दिन गए, 5 दिन में हमारे 10 शिफ्ट हो गए। 10 शिफ्ट में क्या बेसिक एनालिसिस रही है फिजिक्स की। तो एक चीज काफी बच्चे देखे होंगे, इसको लेके न्यूज में भी चल रहा है कि देयर आर प्लेंटी ऑफ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस। आउट ऑफ सिलेबस इस साल इतना ज्यादा है, हर साल आता है, 1-2 आ जाता है और वो थोड़ा मार्जिन वाला आउट ऑफ सिलेबस रहता है कि है नहीं है। अब की बार एक्जैक्टली डिलीटेड पोर्शन से सवाल आया, डीके कांस्टेंट से आया है, कार्नोट इंजन से आया हुआ है, इवन अल्फा बीटा डीका से आया हुआ है। तो ऐसा वी हैव नॉट सीन अर्लियर। दैट इज व्हाई ऑल फिजिक्स टीचर आप देखोगे कि बात चल रही है कि दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट फिजिक्स पेपर्स इस बार। ठीक है, तो आपको उसको लेके ओवरथिंक नहीं करना है सेकेंड शिफ्ट में, क्योंकि ये वाले जो भी आपके गलत क्वेश्चन है यू विल गेट मार्क्स फॉर इट, वेदर यू अटेम्प्ट वेदर यू डोंट अटेम्प्ट, आपको उसके नंबर मिलते रहेंगे। ठीक है, पेपर बहुत अच्छा गया। और बताओ बच्चों, हाउ मच आर यू ऑल एक्सपेक्टिंग। तो उसके बेसिस पे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहां पे परसेंटाइल्स आके रुकेंगे, वील गेट एन आइडिया बेस्ड ऑन दैट। एनीवन वांट्स टू शेयर कि सर इतने नंबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा कम भी है ज्यादा भी है, तो एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा हम लोग को बेटर। और मैं आपको बता पाऊंगा कि कितने रैंक पे, कितने परसेंटाइल पे आपकी आ सकती है, कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट होंगे। ओके, 121 180 में NIT मिलेगा इस शिफ्ट में। 180 में NIT मिल जाएगा आपको, टॉप स्ट्रीम्स नहीं मिलेगा, टॉप NITs नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा इस डिस्कशन में 143 पे भी आ रहे हैं। 143 पे NIT थोड़ा टाइट है अभिषेक, बट ठीक है, दैट स्टिल अ गुड कोर। आपको GFTI से काफी सारे अच्छे मिल जाएंगे। न्यूटन ऑफ कूलिंग से भी आया था, यस बोनस विल बी गिवन, स्वप्निल बोनस मिलेगा उस पे आपको। ठीक है, अच्छा चलो इस पे चर्चा करते रहेंगे और भी आपको इसके रिलेटेड, परसेंटाइल रिलेटेड आपको बताने के लिए बशीर सर भी यहां पे हैं। आइए सर। तो सर बच्चे बोल रहे हैं 198 121, आपको क्या लगता है कि 198 इन स्कोर्स पे रफली क्या परसेंटाइल आएगा? 198 डेफिनेटली 99.34 परसेंटाइल आएगा। Sure. मतलब आपको मतलब NIT सीट तो है 100%। NIT सीट है वहां पे आपके लिए। 200 is undoubtedly 99.4 something kind of result. Exactly sir. Yes sir. तो जितने बच्चे आ रहे हैं तो आपका 99 परसेंटाइल कहाँ पे? 190 180 के राउंड जाएगा? Yes sir. 180 to 190. And जो बच्चे जो I mean स्कोर थोड़ा कम है, nothing to worry. The questions are somewhat some lengthy and all. Exactly. Sometimes 120 130 स्कोर भी एक दो पेपर्स में अच्छा स्कोर है। हाँ. So अगर किसी बच्चे को स्कोर्स कम है, nothing to worry dear students. So अच्छा स्कोर हो सकता है, right? Don't worry. And at the same time हमारा नेक्स्ट स्पेल में भी हमारा टेस्ट सीरीज है सर। Exactly. और टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अब जो जनवरी सेशन के पेपर्स है उसके एनालिसिस करके उसके बराबर नेक्स्ट स्लाइड में देखिए सर एक बार। ओके क्वेश्चन है राइट, यहाँ पे इसी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे है हमारा रैंक प्रेडिक्टर है। यहाँ पे आपका डेटा दे दो, आपका रैंक भी पता चलेगा। इसके साथ साथ हमारा क्या है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज रिलेटेड एक सीरीज भी है, सिर्फ 2999 में वो सीरीज आप ले सकते हैं। उसमें ये क्या है, जो क्वेश्चन पेपर ऐसे आए हैं उसके बराबर क्वेश्चंस हम वहां पे रख रहे हैं वेरी सुन। ओके, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे डेटा फिल करेंगे तो उनको एक्सपेक्टेड रैंक मिलेगा, परसेंटाइल मिलेगा। और साथ ही साथ इवन कौन से कॉलेजेस में आपके चांसेस हैं बेस्ड ऑन योर रैंक एंड एवरीथिंग, वो भी पता चल जाएगा। इट विल टेक इनटू अकाउंट आपके स्टेट से हो एवरीथिंग लेके। तो ये आप जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहीं पे आप अपना डेटा डालो, अपना प्रेडिक्टेड स्कोर आप डालो और आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। करेक्ट, ठीक है। तो सर आई हैंड इट ओवर टू यू नाउ। यस सर, थैंक यू वेरी मच। मैथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाय सर। हाय सर। सो हमारे साथ अक्षय सर भी है। सो सुपर एनर्जी हियर। अक्षय सर होते हैं तो बच्चों as far as the questions that we have got is quite simple sir। अभी तक जितने भी questions मिले हैं और ऐसा होता भी है सर, memory based questions में बच्चों को simple questions ही ज्यादातर याद रहते हैं। हाँ सर। So let's have a discussion over the first question sir। बच्चे ये याद रखना कि कभी-कभी क्वेश्चन सिंपल हो सकता है लेकिन एग्जाम में विद इन द टाइम में करना डिफिकल्ट हो सकता है। सो डोंट थिंक लाइक मैथ पेपर इज सो इजी, इट इज एज यूजुअल लाइक अर्लियर।
एज ऑफ नाउ हमें जो क्वेश्चंस मिले वो देखा था, वो तो लेंथी ही है, उतना आसान से आंसर कट होने वाला नहीं है. सो इफ यू गेट लेस स्कोर लाइक इन मैथ 50, 40, 60, also very good score in math, dear students. Okay, so sir अब करेंगे? Yeah, बिल्कुल start करेंगे. Let's so start. ये is a 3x3 matrix and matrix में element का definition दिया गया है. ये ij is √2 power i plus j. So third row of a square में sum of the elements पूछ रहे हैं. Yeah, बहुत इंपॉर्टेंट है. a square है बच्चों. a square है. First of all, let's determine sir a matrix. Yeah. a matrix determine करते हैं सर. वो लोग मैथ्स में बैड है क्यों भैया? So you want मैम सर कॉम्बिनेशन? नहीं मैथ में सर मैथ इज बैड, सब्जेक्ट बैड, टीचर से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. फाइन, चलो करते हैं. ठीक है सर. 224 इज एक्सीलेंट स्कोर. यू आर सेइंग द आंसर और स्कोर? आई थिंक यू आर सेइंग द आंसर. आंसर. या योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. समर्थ, सुपर्ब आंसर, राइट. चलो ये 3x3 मैट्रिक्स है. ये पॉइंट नंबर 1 है सर. हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं. A matrix A I √2 power I plus j means this is √2 power 2. A 1 1 A 1 2 √2 power 4. A 1 3 है 4. Yeah, √2 so √2 power 4. Next element है √2 power 2 1 या √2 power 4. 4 √2 power 5. This is √2 power 4. √2 power 4 √2 power 5 √2 power power 6. फाइन, चलो ये स्क्वायर लिखना है. सो आई जस्ट वांट टू सेव टाइम. सो हमें भी क्या थर्ड रो पे जाना है. थर्ड रो पे जाना है. माने थर्ड रो में A31 एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है. करते हैं √2 power 6 प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस √2 power 8 प्लस √2 power 10. ये देखते हैं √2 power 6 मींस 2 क्यूब हो जाएगा सर. 8 16 16 32 ये 56 हो गया. सो ए पर्टिकुलर मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट 56 हो गया. बिल्कुल सर. नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट के लिए थर्ड रो सेकंड कॉलम करते हैं. एब्सोल्युटली. थर्ड रो देखिए दिस इज √2 power 7 प्लस √2 power 9 प्लस √2 power 11. एग्जैक्टली देखिए इसे √2 से मल्टीप्लाई किए हैं. सो यू नो नीड टू कंप्यूट. दिस इज 56 √2 ओनली. बिल्कुल सही है. राइट. नेक्स्ट वाला अगर आप इस सब में से √2 कॉमन ले लेंगे तो बच्चों यही सीक्वेंस आ जाएगा आपको. नेक्स्ट रो थर्ड कॉलम करते हैं. आपको √2 स्क्वायर आता है इनटू दिस. √2 स्क्वायर इनटू दिस माने 56 इनटू 2 होगा. इनटू 2 हो जाएगा. राइट. सो 56 इनटू 2 विल बिकम 112. थर्ड रो और थर्ड कॉलम को करेंगे तो एक एक्स्ट्रा √2 का मल्टीपल आ जाएगा बच्चों, जिसकी वजह से 56 √2 इनटू √2 56 इनटू 2 हो गया सर. या सो इसका आंसर 168 प्लस 168 प्लस 56 √2 हो गया. एंड अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा. सो दिस इज 168 प्लस 56. आंसर करो. You will get 224 is the right answer. And sir, one of the student has already given the answer. Yeah. Yes, wonderful. Yeah. So 224 is the right answer, dear students. अच्छा 2 to 5 भी दे रहे हैं कुछ बच्चे. 2 to 5 नहीं 2 to 4. 2 to 4 is the right answer. 2 to 4 हो रहा है. 2 to 4. 2 to 4. Maths is very difficult. No बच्चे. Yeah. अभी तक ये मैथ पेपर लेंथी है, डिफिकल्ट नहीं, लेंथी है. हमें डेफिनेटली सर क्वेश्चंस ऐसे ही है. हमें कौन भी बच्चा अब तक ऐसा नहीं बताया कि मैथ पेपर इजी है. राइट. सो ये आज का पेपर भी जस्ट लाइक अर्लियर पेपर जैसा है. So nothing to worry. लेकिन if they use the strategy sir, like if they have to go to the third row, so directly they can jump to the third row elements in this way. So that will. लेकिन सर most of the students के लिए एग्जाम में इतना आइडिया आना within the time difficult है. इसलिए हम ये क्वेश्चन को लेंथी ही बोलना चाहिए. Absolutely sir. और वो past experience होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस का. Correct. Okay sir, let's move to the next question sir. So next once again rank predictor है आपके लिए dear students. यहाँ पे आपका डेटा डालो. So आपका rank predictor I mean to say these all information they have to fill sir and they'll be able to predict the rank. Very good, excellent. Sir next sir एक क्वेश्चन पुनीत कुमार तो एक्साइटेड है इस क्वेश्चन. या पुनीत कुमार 224 राइट. सो 7 power 103 is divided by 23. कल ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट पूछ रहा रिमाइंडर का क्वेश्चन कभी आया है क्या? अब तक तो नहीं आया. ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है. बाइनोमियल थ्योरम में जब हम यूट्यूब में लेकिन सर सेशन किए थे उसमें बताया था रिमाइंडर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है. वहां से क्वेश्चन निकलेगा बोल के. अक्रॉस एवरी शिफ्ट सर one क्वेश्चन यूज्ड टू कम. Past year also in 2024 2-3 questions we got sir. 2-3 but A spell में this is the only question we got. So यहाँ पे some student बोल रहे हैं 17, some giving 14. I think answer is 14. देखते हैं बच्चों. So answer मुझे भी perfect नहीं पता. 23 से डिवाइड करना है. पहले ये करते हैं 7 square is 49 sir. Absolutely. 49 means 23 46 it is. और मैं भी ये कहूंगा सर एक बार 23 46 69 तीन वैल्यूज तो हम लिख ही देते हैं 23 के मल्टीपल में. 23 मल्टीपल 46 and then 69 ऐसे लेते हैं. सो
49 in the sense you see Is near to 46. when divide and congruent to 23 it is 3 sir. Absolutely. So ये करते हैं 7 square into 51 into 7 into 7. Absolutely, sir. 7 square can be replaced by 3. 49. A 3 power 51 into 7 sir. Absolutely, sir. So 3 cube you see sir 3 cube is near to 27. Yeah. So इसे 3 cube power 17 लिखूं? Absolutely, sir. Yes sir. Into 7. Yeah. ये 27 माने 27 divided by 23 again it will have remainder 4. 4. So हम 4 power 17 Into into 7 लिखते हैं सर. Absolutely, So 4 multiples पढ़ते हैं सर. अब 4 का क्यूब देखेंगे सर क्योंकि 64 के नियर है वो. हाँ सर. ओके. So 64 माने अगर ये 4 क्यूब इसे हम ऐसा लिखते हैं 4 क्यूब into we can write 5. So 15 का मल्टीपल है 5 ले लीजिए और 4 स्क्वायर लिख लीजिए सर. So 17 बनाना है, 4 4 square. square 16 है ना सर. 16 4 क्यूब into 7. 64 है. हाँ 16 into 7 112 बना देंगे उसको अलग डिवाइड कर देते हैं 23 से या फिर आप इसमें भी ले So सकते हैं. fine 4 क्यूब into 5 लिखते हैं into 4 square into 7 लिखते हैं. Absolutely. ट्राई करते हैं 4 क्यूब is 64. 64 माने divided by minus 69. 5. Yeah, minus it 5. will be minus minus 5 power 5 into 16 into 7 sir. Absolutely, sir. Yeah. So this अब is 16 negative. into 7 सर 112 हो जाएगा यहाँ पे. 16 into 7 112. So 23 से डिवाइड करने पर कितना मिलेगा? -3 रिमाइंडर आ जाएगा सर. -3 आएगा. So अगर ये -3 होता है ये minus 5 power 5 into -3 आप ले सकते हैं 5 power 5 into 3 सर. Absolutely, sir. हाँ अगर 5 power 5 लेते हैं 5 square 25 है. 5 square 25 है. हाँ 5 square into 5 square into 5 into 3 लिखो. 5 square 25 माने 2 है. Remainder here it will be 2. ये Then 5 again square 2. again 2. This is 5. This is 3. 10 60 होता है सर. 60 divided by 23. 60. So रिमाइंडर -9 आ रहा है. -9. जिसे हम प्लस करेंगे तो 23 minus 9. 23 minus 23 minus 9. So that will be 14, sir. Yeah. 23 minus 9 will be 14. 14 is the answer. Yeah. बच्चों. So Puneet Kumar, absolutely, you have given the answer as 14. Yeah. बच्चे का सही है. 14 is the right answer, Puneet. So appreciate the student. But फिर sir, मतलब इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी बहुत सारे स्टेप्स में. बच्चों लास्ट तक आप करते जाएंगे तो you'll be able to get. करेक्ट सर. थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए. Absolutely. अगर आधा करते हैं तो टाइम लगेगा, स्किप करते हैं तो टाइम ऐसा नहीं. लेकिन इसी एक्सपोनेंट तो घट के जा रहा, सो आंसर तो जरूर निकलेगा. राइट. बच्चे मुझे ये बताओ मैं हिंदी में बोलूं क्या इंग्लिश? सर हिंदी में बोल रहे हैं तो हमसे क्या चाहिए, हिंदी और इंग्लिश? Both the category of students are there. Some of them they know pure English and some of them they want to learn in Hindi. So we'll be speaking. मेरा पॉइंट एक है सर कि अगर आप हिंदी में पूछते हैं तो मैं अंग्रेजी में आंसर देता तो डिफिकल्ट होता है. सो होना भी डिफिकल्ट है. सो इसीलिए ओके पुनीत वांट्स इन इंग्लिश. ओके इंग्लिश. सो या अथर्व हैज गिवन ब्यूटीफुल आंसर. इंग्लिश करते हैं. चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. सो विल डू दिस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट. कानपुर ये तो बहुत इजी है क्वेश्चन बच्चों. डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन है. आईआईटी कानपुर ड्रीम कर रहे हैं बच्चे उनके लिए यहाँ पे कानपुर दिया गया है. बिल्कुल. सो letters sir of the word Kanpur are arranged in the dictionary, then 440th word होना चाहिए. बिल्कुल. Fine करते हैं dear students. We'll do Kanpur first alphabetical order. A sir. A is 1, then K is 11, and T is N is 13, P 16, R 18, U 21. I think you know these numbers dear students. A1, K 11, N is 14, P 16, R 18, U 21. Right? You might have done reasoning. Fine. The number of words that start with A, there are 5 are there. 5 factorial 120. 120. You must remember that यहाँ पे 440th word होना चाहिए. इसलिए हम ये नंबर को क्रॉस करके जाना चाहिए. Absolutely. You have to cross this. Then starting with K, then again 5 factorial 120. Starting with N, 5 factorial 120. 360 हो गए सर. Next 120 आता है तो it will become 480. It will cross 440. So it P must से start ही with. आंसर स्टार्ट होगा. So we cannot take all words starting with Sriram. अच्छा सारे ऑप्शन से सर P है तो फिर ऑब्वियसली हमें P से स्टार्ट करना होगा. हाँ राइट. अच्छा ऑप्शन छोड़ देते हैं. इजी है ना सर? बिल्कुल. So P ये वाला P A से आने वाला 4 factorial 24 है. अब देखिए यहाँ तक 360 है. So 360 means we just require 80 more. Absolutely. So 24 we got. Then PK. 4 factorial again, sir. 4 factorial another 24. PN. PN. So 4 factorial 72 हो गए सर. So we 72 हो गए. 8 is remaining. 8 more. If I take PR, we will get another 24. So we cannot take. So let's take sir PN वाला ही लेना चाहिए. PN कैटेगरी में 24 आ गए हैं सर. अब नेक्स्ट होगा सर PR कैटेगरी में हमें एंटर लेना होगा. Correct.
So पी आर में एंटर होते हैं, सारे नहीं लेते हैं। पी आर ए, पी आर ए, ओके, पी आर ए में 3 फैक्टोरियल आ जाएंगे, 6 आते हैं, 6 हमें वी वांट 8, इट इज डन, 2 मोर। यस सर। सो पी आर के कैटेगरी में आ जाएंगे सर। के देन पी आर ए में तो 6 आ गए हैं सर, तो Okay. पी आर के से बिगिन करते हैं हम। हाँ सर, पी आर ए, नहीं के, पी आर के, राइट, पी आर के, करेक्ट सर, क्योंकि पी आर ए के सारे अपने करेक्ट करेक्ट सर, करेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी ए से हो गए, सो हम लेते हैं पी आर के। पी आर के तो हमें कंप्लीट लेते हैं तो 6 हो जाते हैं। में हाँ, सबसे पहला जो वर्ड आएगा पी आर के में सर, ए एन यू, के, इसके ए बाद एन यू, या पी आर के ये होता है, हाँ पी आर के, इसके बाद ए एन यू आ ये जाएगा, NU सबसे है। पहला वर्ड वो आएगा। अभी हाँ। एक और बनाना है हमें, हाँ सर, तो आप ए एन यू लिख देते हैं हम यहाँ पे। Okay. तो ये 39th वर्ड हो जाएगा सर। यस सर, मतलब हमें 2 वर्ड्स रिमेनिंग है यहाँ पे। ओके, यू एन, हाँ, तो अब हमें बस इन दोनों को सर रिप्लेस करना है। तो Okay. पी आर के ए यू एन विच Okay. इज गिवन इन द ऑप्शन ए सर, करेक्ट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। या तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी कि इसका ऑप्शन ए इज अ फाइनल आंसर। पुनीत बिल्कुल आपने सही बोला है, Yeah. और ऑप्शन ए इज अ फाइनल आंसर। So this is simple alphabetical order. I mean, Dictionary based rank problem, kind yeah. of rank kind of In the problem. previous year Standard also, question sir, है. like I remember one of the shift, there was a question of dictionary problem. तो Okay. हर बार जेई में आता ही है। Okay. Let's have a discussion over this ये question. क्या है सर? A1 to A24 they are in AP. 2024 टर्म्स हमें एपी में दे दिए हैं सर, Okay. और हमें कुछ टर्म्स पकड़ाई हैं, जैसे हमें फर्स्ट टर्म पकड़ाई, फिर 5th, फिर 10th, फिर 15th, फिर 2020 एंड देन 2024। Okay. और इनका सम 2033 दिया हुआ है। Okay. इस क्वेश्चन को देख के सर मुझे ये ऐसा समझ में आ रहा है, एक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, द सम ऑफ द टर्म्स टेकन सिमेट्रिकली फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड इज अ कांस्टेंट। Okay. और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो वो कांस्टेंट जो है वो ट्वाइस द मिडिल टर्म ही हो जाता है, आप ऐसा समझ लीजिए। Correct sir. तो हम मैंने एक काम अगर कर आप सकते हैं, सर, A1 प्लस A24 A को पॉइंट K है लिख देते सर, हैं सर। मैं ये बोलते हैं A1 प्लस A20 A5 प्लस A10 प्लस एंड सो ऑन। ये देखिए, ये 2020 24 प्लस ये 2024, इसके प्रीवियस टर्म क्या होता है सर? ये 2015 होता है। एब्सोल्युटली सर। सो पॉइंट ये है, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, श्रीराम आई एम हियर, डोंट वरी। सो you see sum of these two, एब्सोल्युटली सर। माने A1 plus First term from A24, beginning, first term A2 from plus last. A, you see the suffixes, sum of the suffixes is 2025 this year. Absolutely. Yesterday also some student asked in a group whether 2025 वाला question आया है आया क्या? नहीं आया। Yesterday we have seen अच्छा, in one, remainder में आता है सर in ऐसा। yesterday some calculation we got 2025. yeah. So in NCR related problem, today you see sum of the suffixes. Even here also 2025, 2025, 2025. So symmetrical terms from beginning and from So, end. कितने पेयर्स है? सपोज अगर हम के मानते हैं, अच्छा, जैसे आप ये यहां से यहां तक देखेंगे ना सर, हाँ सर, तो 2020 माइनस 5 कर लीजिए तो 2015 हो गया। ओके, एंड 2015 में नहीं ऐसे नहीं, ओनली 5, 10, 15, 2020 upon मल्टीपल्स five ऑफ कर 5 दीजिए। है। हाँ, तो आप अपॉन 5 कर दीजिए। दिस इज 5 2015 into 1, 5 into 2, 5 into this is 404 सर, ये 404 आ रहा है सर। माने 202 पेयर्स होते हैं इधर। 202 पेयर्स है, माने तो ये total 203 पेयर हो जाएंगे सर। करेक्ट सर, 203 पेयर्स, इट इज 2233 सर। एब्सोल्युटली सर। तो Double- ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा हाँ जब सर। आप 2233 को 203 से आप डिवाइड So करेंगे। k into 203 सर, ऐसा नंबर अगर होता है 11 आ रहा है सर। हाँ सर, 11 आ रहा है। So 11 into 203, right? absolutely. 203 got cancelled. K K की value value is 11. माने अगर A सम में A1 plus 2024 वाले कितने केस होते हैं इधर? तो ये अब सारा ही हमें सम लेना है सर। तो Correct. अब ये इसके जस्ट हाफ केसेस हो जाएंगे, पेयर में कन्वर्ट करेंगे। करेक्ट सर, 1012 1012 पेयर। 1012 So पेज 1012 into K आ 11 जाएगा। 11 टेबल पता है ना स्टूडेंट्स? So 11 ये- टेबल, ये करेक्ट। हम निकाल सो देते पता है, वेरी गुड। सो 11 2 are 22, 11 1 are आपके 11, पास शॉर्टकट है सर, 13. 11132। Yes. वेरी गुड सर। 1132. फाइन सर, बिल्कुल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है मैथ का ब्यूटीफुल 3 क्वेश्चंस। सो यू सी, क्वेश्चंस आर नॉट न्यू, क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट, बट डू रिमेंबर within the time to answer these questions you definitely require support of Bashir sir at Infinity Learn as well as हमारे अक्षय सर का सपोर्ट चाहिए डियर स्टूडेंट्स, राइट? And sir, we are here with sir for which answer. element in the group 15 has lowest ionization energy? मैं ही बताता। नहीं सर, इसमें सर फराज सर की जरूरत Which पड़ेगी। element in group 15 has lowest ionization energy? So bismuth, phosphorus, arsenic, antimony. ओके, Correct, sir. So, right, I'll ask
Yes. Yeah, sir. Sir, हमें बोलने नहीं देते. So just now you have solved one problem. K is equal to what you said, sir? 11, sir. 11. Yeah. So in our chemistry, K means potassium. Are you getting, sir? Yes, sir. So K means potassium in chemistry. So which element? So from here I'll take care, sir. One Okay, sir. second. Thank you. Sir, lowest ionization, मैं बताता sir. Okay, One second. Mathematics faculty I to answer let me chemistry try question. if you allow me, dear students. Okay. Ionization energy माने so आयन बनाने के लिए माने एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लेस एनर्जी किस एलिमेंट के लिए चाहिए, जिसका रेडियस ज्यादा होता है उस और स्टेबिलिटी कम होता है, उसे आराम से निकाल सकते हैं. निकाल के बताओ. Phosphorus is P15, sulfur 16, phosphorus 15, Yes. 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए. उसके बाद 5 है, 3s2, 3p3, half filled, it is more stable, ionization energy is more phosphorus, bismuth, arsenic, antimony. Sir, the answer is arsenic. Sorry, sir. Wrong answer. Wrong answer, bhai. Mathematics, sir. The answer It's is okay. antimony, Bismuth. bismuth, because you know B is there. Yeah. Because bismuth is a metal. Okay. Bismuth is a metal. Bismuth, Right? Yes. So Fine, dear bismuth is a student. metal. Thank you. Thank So you. bismuth is a metal and metals have low Fine. ionization Okay, sir. energy. Carry on. Right, sir? Fine, sir. Thank you, sir. So half answer is correct, I guess. My analogy. Am I Yeah, correct, yeah. sir? Half answer. Phosphorus answer. My You analogy will is correct. get half seat in IIT JEE, sir. See you, sir. So one seat will be half only for you. Right? Okay. So not in paper. Okay. So which element in the group have lowest ionization energy? Bismuth. Since it is a metal in nature, some students are saying that this question was wrong question. Question is not there in the exam. Values were given. So I don't know the students how the question appeared in the examination. You are telling that metalloid नहीं था, sir. Okay, that means arsenic नहीं था option में, antimony arsenic नहीं था. Okay, no problem. Bismuth answer है उसके वो, that is confirm. Bismuth is the answer, that is confirm. Okay, चलो let's continue with proper question. Was this question available in your examination? Before only tell me. After solving, sir, एग्जाम में नहीं आया था, रॉन्ग क्वेश्चन है, then it is waste of time. This question, everyone, integer question, this appeared. Right. Agree? Ready? Yes. So number of benzenoid structures, isomers having molecular formula, this one, which do not give Bayer's reagent test. So Bayer reagent test means in which C double bond C, that is alkene, is absent, you have to see. Right? So all the students, we know that if you take from 9 carbons, if it is take 6 carbons inside, then 3 carbons can be outside. Correct? Right? So hydrogens, if you see 5 hydrogens here, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Correct? So the concept is benzene ring is there because he is saying benzenoid. Okay, so benzene ring is compulsory and the 3 carbons are outside. And here you have to write the structures. Indirectly, he is asking isomers of this. Indirectly, in the question, he is asking isomers of this. So let me draw some good number of benzene rings and let me later check the answer. How many are coming? First, let me draw some structures and I will, actually in online teaching we can copy paste like that. Let me draw the structures. Ready? So now look here. So here you can write isopropyl, N-propyl, isopropyl. 2 compounds came. Then ethyl, methyl, then ethyl, then meta, then ethyl, then at para position. Asked for non-aliphatic. Okay, anybody can type the full question? Hello. Amin Rao, can you type the full question and drop here? I will explain that one. Anybody can type the real actual question which some students are telling?
Put the, please don't say wrong question. Type the question. Type the question in the chat and leave it. Then I'll discuss that one. If you don't, just to don't say correct wrong question. Okay. Then after that, now coming to, then you can take 3 methyls, right? Oh, sorry, this one is same. Right? Now, right? So if you try to write at this position, it will become same. So it is 1, 2, from here it will become 1, 2 again, right? So these 2 are extra, you can just ignore it, right? Is it clear, everyone? Right? Okay, right. Next question. This question came in exam or not? First tell me. Some students are saying, 1 minute, sir, that C9 ester which doesn't gives Bayes test having 4 non-aliphatic substitutions. Having 4 non-aliphatic substitutions. What is this? 4 non-aliphatic substitutions. So here you can see 3 possibilities there. So please type the proper question and send me. We'll discuss the answer. Okay, right. 18, 13. But doesn't give Bayes test having 4 non-aliphatic substitutions. Okay, so please type the question properly. Was this question available in the examination? Sriram, Samarth, Harsh, Himanshu, please anybody tell me this question was there in exam or not there, first of all. Yes, it was there. Was it there? This question was there. Total number of non-bonding electrons in NO2. Yeah. Total non-bonding. So non-bonding means right. So here in oxygen you will have 1, 2, 3 and 4, correct? Right? Here 1, 2, 3, 4, 5 and this one is 6 which came from the negative charge, correct? And nitrogen belongs to 5th group, 2 went there, 1 went here. So 1, 2. So total you will have 12 non-bonding electrons. 4, 6, 10, right, 12. Please check it, right? Check it please. 6, 12 will be the answer. Okay? Okay? Right. Now this question is very cheap question, very cheap question, very cheap question. Tell me, what is the answer? This is from biology. Actually, if you studied biology properly in 10th class also you can solve this properly, correct? Right. Everyone tell me the answer. Which of the following is an essential amino acid? Tell me the answer. Tell me the answer. Which of the following is essential amino acids? Essential amino acid means the amino acid which body can't synthesize. Okay, the amino acid which body can't synthesize and needed in food. Needed in food. That is called essential. What is the answer? Answer is valine. Essential amino acids, if you see, answer is valine is essential. Alanine, glycine and aspartic acid body can synthesize. Alanine, glycine and aspartic acid are body. Human body can synthesize. Human body can synthesize. Clear everyone? Everyone, is it clear? This question wasn't given, some are saying given, some are saying not given, whatever. So for very soon our physics faculty is joining, okay. This question wasn't given, I don't know. Sri Charan Reddy, some of the colleagues, some of your friends like you, some of the students like you
have given this based upon their memory, right? Okay, so if it is wrong question also, nothing will happen. Knowledge you got correct, no? Got it? Knowledge you got correct? Got it, everyone? Got it? Options are more in these questions. Acha, more options were there. Okay. Option 4 was not there. Just leave it off, man. Chill. Okay. Chill. Just leave it off about the structures and discussions. Okay. Chalo. Thank you. Okay. So I welcome my physics colleague. Okay. And he will discuss with you the physics question. And tell me all of you all, overall, how was your chemistry paper? Everyone tell me, how much is your expected score in chemistry? Everyone please give me thumbs up and reply, how much is your expected score in chemistry? Means out of 100 marks, how much are you expecting? Okay, how much are you expecting approximately from your 100, like 55, 45, 85, 75, whatever. Okay, sir, given so many acids. Sri Charan Reddy, exact paper discussion will happen when exact is given from the NTA. Are you following? This is all memory based, imaginary based, given from students. So exact question how it came, that either you give in the chat box exact question, you type and send. So this is the exact question, and what we are having we'll discuss. And if you want genuine question, 100% accurate question, that you will get in the first week of February, when NTA people will upload all the shift question papers along with key and all the details. And that time we'll come on the screen and discuss perfectly exact question, and obviously you will get the perfect exact answer also. Okay, so chalo, thank you all of you. I welcome Akshay sir, the Shire of Mathematics department. Please continue, sir. Thank you all of you all. Sir, Mike. No, sir. Okay, you have. Yes, sir. So students, we are back with the math question. So we got few questions again of mathematics section. Once again, math. Yeah. So sir, this limit question, sir. This limit question. In the year, sir, 2023, the same type of question was there, where even a sir, rationalization in the previous shifts, exact question was there. Previous means can't say 28, 26th or 25th. I've seen this question in these sessions only. So that is why memory-based sessions are important, sir, for students. Because we are finding some of the questions to be similar, being asked from the previous shifts. No, sir, it was not asked. Okay, Soumya is saying. Okay. It was not asked. Chalo, theek hai. Fir bhi, if this question is being asked, no. So then we will ask. So what is the answer? अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर इसको करने का तरीका है कि आप रैशनलाइज कर लीजिए √/a माइनस √b से. तो चलो ठीक है, वी कैन लीव दिस क्वेश्चन. अगर ये आया नहीं है तो वॉट एवर द स्टूडेंट्स आर गिविंग बेस्ड ऑन द मेमोरी बेस, वी आर गिविंग दैट. दैट्स फाइन. चलो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है अब अप्रैल शिफ्ट में, तो आप रैशनलाइजेशन से कर सकते हैं. ऑलराइट. हाँ सर, एक क्वेश्चन देखिए सर, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वाला. हर एक पेपर में देयर इज अ क्वेश्चन ऑन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. या एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वी आर हैविंग इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस. यस सर, यू सी इवन इन आवर YouTube sessions I have told. So very important sessions. You can see, dear students, we have run a series. 60 minutes into 10 session is equal to 60 marks. और matrices वाला सेशन लेके देखिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डेफिनेट क्वेश्चन, इन दैट इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है बल्कि मैं बताया. एब्सोल्युटली. आप चेक कर सकते हैं बच्चों, यू कैन टेक दैट. अब देखिए, यू सी देयर इज नो क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ दीस 10 विदाउट ए क्वेश्चन फ्रॉम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिसेस. एब्सोल्युटली सर. या राइट डियर स्टूडेंट्स, हियर 3 इक्वेशंस आर गिवन सर. Given that they have infinitely many solutions and m take two values alpha and beta, sigma r power alpha plus r power beta, sir. Right? So very easy question, sir. Sir. So we can form the determinant. So keeping the third column, sir, 1 m square. 1 1 1 1. Okay, you want to put 1 1 m, right? Okay. 1 1 m kar dijiye. 2. This is you mean to say xy coefficient 1 1 1 1 1 1. This is Amino constant. 1 2 m. This is 1 4 m square. Let that be 0 होना चाहिए. Absolutely. आपको you will get a quadratic equation here. So 1 into 2m square minus 4m minus of m square minus m plus 4 minus 2, which is 2 equal to 0, which is 2m square minus m square is m square minus 3m plus 2 equal to 0. A simple quadratic equation. M must be 1 comma 2.
Absolutely, sir. M has two possibilities, dear students, 1, comma 2, right? So, my dear students, I think you also got the same results of alpha and beta. Alpha is 1, sir, and Yeah. beta is 2. Okay. Sigma r is equal to 1 to 10, r R raised power to 1 1 plus r power 2. Very easy, sir. So sigma r, you know, 10 n into 10 into plus 1. n plus 1 by 2. This is n 10 into n 10 plus 1 1 into into 2n 2n plus 1 by 6. 6. So 10 into 11 by 2 you can take 55. common. 55 common ले सकते. 1 plus 21 by 3 means 7. 7, sir. So 55 into 8, sir. 55 into 8 they got, sir. This is 110 into 4, sir. This is 440. 440 is the answer, bachcho. Yes. Yeah, Sri Charan Reddy. Yeah, Excellent. 440 is the answer, dear Very students. good, students. Yeah. Keep it up. So wonderful. So, Same dear question students. of the previous one. Yes, sir. Okay. Yeah. Yes, this model question were there in previous, sir, earlier. Acha. So a matrix question, that's what he is saying. Vinay Chauhan, yes, you are correct, dear students. Acha, yeah, all the students were feeling that like some of the questions may be wrong because these are memory based questions. So नहीं whatever ये क्वेश्चन तो रंग नहीं, वो पहले वाले के बोल रहे हैं. नहीं, one of the student is saying this question was asked in the morning shift today. Okay. One of the student is saying 29 January morning shift. लेकिन बच्चों अब जैसे ही हमें questions बच्चों से मिलते हैं, so the same type of the questions we are discussing with you. Yeah. We are not creating the questions by ourselves, but the feedback that we are getting from the student, the same we are discussing. Okay. Yeah. Some of they may match, some of they may not match. So don't worry, it's your practice, guys. Like whatever you do the questions here, no, that will benefit you. So don't worry if Yes, it sir, is. यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर. No sir, shift to. कट ऑफ ठीक है. का शिफ्ट टू क्वेश्चन ओनली है सर, करेक्ट. चलो ठीक है, ठीक है. सेकंड पॉइंट है कुछ बच्चे बोल रहे हैं shift कट to ऑफ नहीं. कितना लगेगा 99 परसेंटाइल के लिए. 99 परसेंटाइल के लिए कट ऑफ 180 अराउंड हो सकता है. हर शिफ्ट के क्रॉस मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा. थोड़ा बहुत, but हाँ. in an average I am saying Plus sir. minus 10. So I have observed that most of the papers are around 2024 के जो पेपर्स है उसके पैटर्न में ही है सर. हाँ. So लेकिन एक बार ऐसा हुआ था 2020-24 में 232 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल एक शिफ्ट में ऐसा हुआ था सर. फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट है First सर. day, दैट first वाज shift. ऑड वन आउट. दैट वाज वेरी इजी शिफ्ट इन 2024 जनवरी. yeah. फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट एंड उसमें लास्ट डे में एक पेपर है दैट वाज वेरी टफ. हाँ तो 166 पे वो 99% ये दोनों हटा के रिमेनिंग पेपर्स दे मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड. 180 इवन plus minus अप्रैल के पेपर आप देखते हैं, अप्रैल 2024 के सारे पेपर्स ऑफ द सेम लेवल. Absolutely, sir. So this time also he tried to maintain all the papers are of same kind of thing. Rather one paper or two papers are extreme. He balanced very well. We must appreciate NTA in this regard, dear students. Now अब देखिए सर एक क्वेश्चन. अच्छा 215 थी 99 सेकंड शिफ्ट सर. ऑलराइट, ओके सत्यार्थ. चलो ठीक है, लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन सर. सो देयर इज अ फंक्शन बीइंग डिफाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x एंड ये प्रॉब्लम मुझे कभी भी फेवरेट है सर. हाँ. क्योंकि अभी कभी कभी डेफिनेट इंटीग्रल का यहाँ पे लिमिट वेरिएबल होता है. इमीडिएटली आइडिया आना चाहिए कि लिमिट लगेगा, right. सो तो डेरिवेटिव लेते हैं. सो f dash x लेते हैं सर. ये क्या होता है? स्टूडेंट्स ने आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया है. हाँ, दे आर एक्सीलेंट सर. हाँ, लेकिन इसमें हो सकता है बच्चों ये x is equals to 1 से 3 है या 1 से 5 है. लेट अस अज्यूम कंसीडरिंग 1 to 5 एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल हैव अ आंसर. लेकिन प्रोसेस देखो, चाहे 1 से 3 हो चाहे 1 से 5 हो, द प्रोसेस रिमेन सेम. यू हैव टू लर्न द प्रोसेस इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द एग्जैक्ट क्वेश्चंस. ओके, Yeah, student, f dash x I have taken. So substitute x into this into x derivative 1 remaining 0. F dash x is this. So we can take some x common. यहाँ पे फैक्टर भी ले सकते हैं सर. x square minus 9x. x minus 4 into x minus 5 है. Absolutely sir. So आप ये कर 0, सकते 4 हैं and 5 critical points. So critical points will be 0, 4, 5. But we just want the function from 1 to 5 only. Suppose 1 to 5 होना चाहिए. Of course, derivative here positive, here negative, here also. positive, here negative. Absolutely, sir. Decreasing, increasing, decreasing, increasing. ऐसा होता है. sir. But I just want the function from 1 to 5 only. 1 to 5. So यहाँ पे देखिए f of 1 find out करना पड़ेगा, f of 5 find out करने का, f of 5 find out करना पड़ेगा. Absolutely. इसके लिए f of x के लिए हम ये करते हैं कि so we'll take integral of this sir, f of x which is इंटीग्रल ऑफ f dash ले लेते हैं x power 4 by 4. This is f dash x minus 9x cube by 3 so 3x cube plus 20x square by 2 10x square plus c हो सकता है plus c plus c. और f of 0 is 0 sir. अब x प्लस में 0 रखते हैं तो 0, so c must be 0. c must be 0 sir. so आपको f of x मिल गया सर. बिल्कुल ठीक. so हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेज में f of 1 फाइंड आउट करो, f of 4 and f of 5 फाइंड आउट करो.
कुछ इंसाइट है सर? f of 1 कितना होता है? हाँ, तो हम इसके अगर 1 डाल देते हैं, 1/4 minus 3 plus 10, 7 plus 1/4 है सर। 7 plus 1/4 29/4 हो जाएगा। 29/4, okay, 29/4 is one possibility, and next sir f of 4 लेते तो हैं। ये हमारा 4 क्यूब आ जाएगा 64 minus एंड देन 4 क्यूब 64 into 3। सर ये क्या है सर? 4 क्यूब minus 3 into 4 क्यूब, so minus 2 into 4 क्यूब लिखते हैं। -2 into 4 क्यूब लिख देते हैं। Yes sir, so 4 क्यूब 60, so 128 आ जाएगा नेगेटिव में सर। correct sir, -2 into means -128, right sir? yes plus 4 and square 60 into 10 160 आ जाएगा। 160, ये तो 0 है। 160 minus 128 32 आ जाएगा सर। 32, f of 4 वैल्यू 32 आ गया। फाइन सर, इसके बाद क्या करना है हमें? f of 5 फाइंड आउट f of 5 भी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल है वो। या f of 5 ट्राई कीजिए। 5 power 4 625/4 625/4 एंड 5 क्यूब 125 हो जाएगा। 125 into 3 करेंगे 375 एंड देन इधर 5 डालेंगे सर 250 आ जाएगा। 250 आएगा। ये क्या होता है सर? दिस इज ये 125 नेगेटिव -125, या so 625 by 4 125 into 4 500 है ना सर? 500/4, so 125/4 निकलेगा। ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। 120/4 अराउंड 30 पॉइंट, राइट सर? 31 पॉइंट समथिंग हो जाएगा सर ये। या 31 पॉइंट, तो जो कि 32 से तो छोटा है सर। या सो मैक्सिमम वैल्यू होता है 32 मैक्स है सर। मिनिमम वैल्यू सर ये और 29/4 होता है। 29/4 मिनिमम है। सो अल्फा से बीटा दिया हुआ है तो अल्फा सर 29/4 हो जाएगा। 29/4 और बीटा 32 है सर। 32 हो जाएगा। 32 ऐड करो और 4 से मल्टीप्लाई multiply करो। कर देंगे। सो यू विल गेट 29 सर प्लस 128, राइट सर? एब्सोल्युटली 128 plus 29 157, राइट? 157 वी आर गेटिंग। 157। अच्छा 154 भी कुछ बच्चों को मिल नहीं, रहा है। 157 है। हाँ 157 आ रहा है। अगर क्वेश्चन ये है बच्चों, अगर 1 to 5 है देन 157 आ रहा है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन में डिफरेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 to 3 है तो फिर हमें 3 पे भी चेक करना पड़ेगा। 125/4 माने दिस इज 31 point something, so maximum तो 32 मिलेगा ही मिल रहा है सर। या 32 29/4, so 29 plus 4 means 128 सर 440 का ऑप्शन नहीं था तो 440 कौन सा 440? हो सकता है हमने कोई पहले क्वेश्चन किया जिसमें 440 हमारा आंसर आया हो। ओके देखते हैं। या 440th वर्ड 440th वर्ड वाला था। तो बच्चों जो क्वेश्चन हमें कानपुर का मिला वो उसके अकॉर्डिंग अगर हम 440th वर्ड ढूंढते हैं तो वैसा हमें मिल रहा है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस है तो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन रीफ्रेम द कॉन्सेप्ट अगेन। ओके यस सर, फिजिक्स एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन माने सर ऐसा घूमते रहना। एब्सोल्युटली इधर इधर घूमते रहना, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। देखते हैं सो फिजिक्स वाला को बुलाते हैं। मैम आइए, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका क्वेश्चन आ गया। सो वी हैव विद अस रवीना मैम। तो ठीक है बच्चों, अब आगे फिजिक्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। फाइन डियर स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड टू इन्फिनिटी लर्न। ओके तो मैथ्स के क्वेश्चंस हो गए हमारे। अभी हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आज आप जिन्होंने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? और जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, जो आप वीडियो को देख रहे हो, आपका अगला अटेम्प्ट है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो एंड ऑप्शन में बताओ कि आपका क्या आंसर आया है, ठीक है? ए ऑप्शन, ओके। कमल सरन बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए आया है, ठीक है, वेरी गुड। आपने काफ़ी जल्दी आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी कोशिश करो सॉल्व करने की। ओके हर्षद भी बोल रहे हैं ऑप्शन ए, आर्यन का ऑप्शन ए, ओके वेरी गुड। काफ़ी बच्चों ने आंसर सही दिया है, ठीक है? चलो चलो ओके, गुन्नू बी का ऑप्शन ए, ठीक है। चलो काफ़ी बच्चों का आ रहा है, जिनका आंसर नहीं आ रहा है उनके लिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड। अंकित, रामजी शुक्ला, वेरी गुड। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, 2 particles of same mass are performing SHM vertically with 2 different springs of spring constant K1 and K2. If amplitude of both is same, find ratio of the maximum speed of the 2 particles। अरे यार बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। नीतीश, ककाडिया, कीर्तन, सबका ए, वेरी गुड। चलो फिर कोई नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था हमारे पास ये, ठीक है? तो इन्होंने क्या बोला है, मास दोनों का सेम है। तो लेट से 2 पार्टिकल को हम ऐसा बोलते हैं m1 m2, है ना? तो यहाँ पे इसका m1 इज इक्वल्स टू m2, दोनों का मास हमारे पास सेम है। और इन्होंने क्या सेम दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2, एम्पलीट्यूड भी सेम बोला था ना, विथ 2 डिफरेंट मास एंड एम्पलीट्यूड, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ इज सेम, ओके एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो लेट से A1 इज इक्वल्स टू A2, ठीक है? तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो पता करना है। ऑप्शंस रॉन्ग, अरे ऑप्शंस रॉन्ग है।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, एक बार देख लो, सॉल्व करते हैं कि क्या आंसर आता है इसका। सो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, वी मैक्स इज इक्वल्स टू ए ओमेगा, ये होता है। तो लेट से जो पार्टिकल 1 है ना, उसका इसका करते हैं हम v1 इज इक्वल्स टू ए ओमेगा 1, और इसका हम सेकेंड वाले पार्टिकल का करते हैं ए ओमेगा 2, ठीक है। तो इन दोनों का रेशो लेना है। ओके, सो रेशो हम लेंगे इफ सो v1 बाई v2, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। सो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ओमेगा का रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। ओके ठीक है, काफ़ी बच्चों का करेक्ट आया है, वेरी गुड। सो ओमेगा हमारे पास क्या होता है, रूट ऑफ के बाई एम, ठीक है। जो भी स्प्रिंग होगी उसके लिए ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है रूट ऑफ के बाई एम। तो फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए लेट से रूट ऑफ ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ k1 बाई एम, एंड ओमेगा 2 हमारे पास है रूट ऑफ k2 बाई एम, ठीक है। तो इन दोनों का रेशो लोगे तो मास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मास कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे v1 बाई v2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ k1 बाई k2, ठीक है। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। चलो, काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया है, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ऑप्शन गलत है। तो देखो, ऑप्शन इसका यही आएगा। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में ये ऑप्शंस कुछ और दे रखे हो, लेकिन आपका जो भी क्वेश्चन पेपर होगा ना, उसमें ये ऑप्शन पक्का सही होगा, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस इधर उधर हो सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, तो चलो अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया है ना, एक बार कमेंट्स में बता दो कि सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं। अगर डाउट होता है तो आपको यहाँ पे पूछना है, ओके। तो अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन दिया था हमें परसेंटेज एरर के ऊपर, ओके ठीक है। तो समझ में आ गया है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, अ फिजिकल क्वांटिटी Q इज गिवन एज, Q हमारे पास दिया है A b⁴ डिवाइडेड बाई CD। If the percentage error in A, B, C are 2, 1 then percentage error in Q will be। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपका 1 मिनट के अंदर वहाँ पे सॉल्व होना चाहिए। ओके, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन सी, ठीक है, वेरी गुड। ओके, ये क्वेश्चन नहीं था, तो अगर किसने बोला है, ऋषभ, अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं था तो आप बताइए कि कौन सा क्वेश्चन था, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो यही क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन गलत है। अच्छा ठीक है, हो सकता है कि थोड़ी सी क्वांटिटीज़ अलग हो, यहाँ पे कुछ और दिया हुआ हो, ठीक है। प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने सी बोला है तो वो यहाँ पे एक बार देख लो, परसेंटेज एरर हम क्यू में कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जितने भी क्वांटिटीज़ है सबका परसेंटेज एरर ऐड होगा, ठीक है। तो ए का परसेंटेज एरर कितना है, 2%, प्लस यहाँ पे b⁴ जो भी पावर होता है ना उसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। सो 4 इंटू बी में परसेंटेज एरर है 1%, प्लस सी का है हमारे पास 2%, एंड डी में हमारे पास है 1%। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2% प्लस 1%। सो परसेंटेज एरर इन Q इज इक्वल्स टू 9%। ओके, सो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा यहाँ पे। ओके, ये इंटीजर क्वेश्चन था क्या, ठीक है, जो भी हो इसका आंसर यही आएगा। ओके, आइए सर। ओके, सो थैंक यू रंजना मैम। यस सर, आइए। okay, so let's move on to the next question. Fine, so Anirudh sir will take this question now. It is the match the column thing, where in column 1 we have been given Young's modulus, torque, coefficient of viscosity and gravitational constant, and we have to match it with the dimensional formulae which are given in column 2, right? Did this question come, students? Let's get a little confirmation here. ये question आया था जितने बच्चे ने ये वाला शिफ्ट दिया, आया था ये वाला। यस सर, बोल दिया ऋषभ ने। थैंक यू ऋषभ, थैंक यू हर्षद। कंफर्मेशन तो मिल गया। चलो, थैंक यू। तो देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आया हुआ होगा तो सर आप इस साइड आ जाइए थोड़ा सा। यहाँ पे अगर आया हुआ होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको, वहां पे मैच द फॉलोइंग है। अब राइट अवे फ्यू थिंग्स आप पहले मार्क कर दो। जैसे टॉर्क का पता है, टॉर्क इज न्यूटन मीटर, और मैंने ये बताया था कि आपको डिमेंशन एनालिसिस में सारे डिमेंशंस याद नहीं रखने हैं। यू शुड रिमेंबर द डिमेंशंस ऑफ फोर्स विच इज mlt-2 और द डिमेंशंस ऑफ एनर्जी, क्योंकि बहुत सारी चीजों का वहीं से आ जाता है, विच इज ml2t-2। टॉर्क जैसे इज फोर्स इनटू डिस्टेंस,
तो mlt-2 के साथ अगर आप l मल्टीप्लाई कर देते हो आपका क्या आ जाता है ml2t-2 ऑप्शन डी। तो ये लग गया इधर, ठीक है, ml2t-2। ऋषभ आपको क्वेश्चन सेंड करने हैं, आप प्लीज इन्फिनिटी लर्न जेई के टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहां से हो जाएगा। टॉर्क से ही हो गया। एग्जैक्टली ये हो सकता है सारे को निकालने की जरूरत ही नहीं हो। ऑप्शंस आर गिवन इन सच अ वे कि एक मैच हो जाए आपका, देयर इज ओनली वन ऑप्शन विद दैट। पर चलो करके दिखा देते हैं फॉर ऑल ऑफ देम। यंग्स मॉडुलस आप कैसे निकालोगे? यंग्स मॉडुलस यू नो y इज इक्वल टू f बाई ए इंटू डेल्टा एल, नीचे ऊपर एल। ये वाला पार्ट डिमेंशनलेस है, लेंथ बाय लेंथ। फोर्स बाय एरिया, फोर्स इज ml-t-2 डिवाइडेड बाय एरिया है L2। तो यहां पे करो, आपका आएगा क्या ml-1t-2 है ml-1t-2 मिल गया यहां पे। कीर्तन कौन से पार्ट में आपको डाउट है, आप बताओ कौन से पार्ट में आपको डाउट है, कौन सा स्पेसिफिक पार्ट आपको डाउट है? बेसिक डिमेंशनल एनालिसिस का सवाल है ये। फोर्स के बेसिस पे सारे रिलेशंस आ रहे हैं। इवन फोर्स के बेसिस पे मैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल सकता हूं। स्टोक्स लॉ में मेरे को पता है फोर्स इज 6 पाई ईटा आरवी, आप उसका भी निकाल सकते हो। यहां पे v का lt-1 लगाओ, इसका l लगाओ, फोर्स mlt-1 वहां से आ जाएगा आपका, ठीक है। यू कैन गेट ऑल ऑफ देम। कीर्तन आगे मूव कर चुके हैं, आप थोड़ा सा पीछे वाले जाके देख लो। वी विल मूव ऑन अगले वाले सवाल के साथ। सर रिमोट खा गया? Yes. अच्छा, थैंक यू सर। आप अगला वाला लेना चाहते हो सर, ये वाला? Yeah. चलो गो अहेड। So let's see this question. A capacitor of capacitance C1 6 microfarad initially charged with a cell of EMF 5 volt is disconnected and connected to another capacitor C2 which is 12 microfarad which is initially neutral. The final charges on C1 and C2 after connection is made are. So ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई, है ना। दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने वाला क्वेश्चन है ये। 10 and 20 है क्या? हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो यार, वेरी फास्ट। Okay, so let's start from here. So first of all, we will take this capacitor, okay, and connect it with a cell of 5 volts. Okay, so this is 5 volts, and this is how much? It is C1, which is 6 microfarad. Okay, so let's find out the charge here. So let's say the charge is Q1 and minus Q1. So what is the value of Q1? Can you tell me? Q1 will be C1 into V. How much is this? It is 6 into 5, which is how much? 30 microcoulombs. Okay, so what is the charge? 30 microcoulombs. Now after disconnecting this capacitor from this battery, we are connecting it with another uncharged or rather neutral capacitor. Are you understanding? Right, so what is this? This is still C1, this is C2. So what are the initial charges? So we would say initially the charge on the uncharged capacitor will be 0. So these are the initial values of the charges. Can you see that? These are the initial values of charges. Now once they are connected, what happens? The potential will be V0 and V0. They will achieve a common potential, as well as the charges will be Q1 dash and minus Q1 dash. Here it will be Q2 dash and minus Q2 dash. So these will be the new charges. So what is the formula? We will use the concept of charge conservation here, है ना। हम चार्ज कंजर्वेशन करेंगे। जो पहले टोटल चार्ज था, टोटल चार्ज पहले कितना है? 30 प्लस 0, इट इज 30 माइक्रोकूलम्स। बाद में Q1 प्लस Q2 डैश, Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहां से लिख के बताओ Q1 डैश कितना हो जाएगा? Q1 डैश हो जाएगा C1 इंटू V0, Q2 डैश कितना हो जाएगा? C2 इंटू V0। ओके, इधर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो आप। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर कैसे आता है? देखो यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूले से आप बोलोगे सर V0 हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। ये आया कहां से फॉर्मूला? चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल से। टोटल चार्ज कितना है? पहले 30 प्लस 0, बाद में भी सेम ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? C2 is how much? 12 microfarad. So 6 plus 12 will become 18. So V0 will be 30 by 18, which is 5 by 3 volts. Is it clear? Once you know this,
Now you can put the values here and get your answer. So C1 is how much? 6 into 5 by 3, it makes 10 microcoulombs, and this is 12 into 5 by 3, which makes it 20 microcoulombs. And can you see still the total charge is 10 plus 20, that is 30 microcoulombs. Okay, so Q1 dash हो जाएगा 10 microcoulombs and Q2 dash हो जाएगा 20 microcoulombs, which will make option D as the correct answer. कितने लोगों का ऑप्शन डी आ रहा है यहां पर? ओके कीर्तन, ये तो तुम्हें समझ आ गया यार, वेरी गुड कीर्तन. सो दिव्यांश has got D, study hub has got D, Tanu has got D. Okay, so many students have got the right answer. So this is cool, na? Very good. Let's move on to the next question, which Anirudh sir will discuss with you all. थैंक यू सर. ये नो नेम ने एक बहुत अच्छा ये बताया, इसमें ये एग्जाम सेंटर में चेक करना कि ओनली वन ऑफ दीज ऑप्शंस हैव 30 माइक्रोकूलम. सर ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था कि जितने सारे हैं उनमें बस एक में ही 30 माइक्रोकूलम नेट चार्ज कंजर्व रह रहा है. दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. चलो बढ़ते हैं अगले वाले पे. अगला वाला हमारा सिंपल असर्शन रीजनिंग का सवाल है. असर्शन रीजनिंग में पहला दिया हुआ है, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज इज मोर इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस देन इन एन अडायबेटिक प्रोसेस. ठीक है, तो इसको देख लेते हैं. अगर मेरा पीवी डायग्राम मैं खींचता हूं यहां पे, ये पता है पीवी डायग्राम पे मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस फ्लैटर होता है, अडायबेटिक प्रोसेस स्टीपर होता है. तो सपोज मैं इस प्रेशर वैल्यू से एक सर्टेन, दिस इज P1, यहां से P2 पे ले जा रहा हूं. अब आप चाहे डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है, तो ये वाला आपका आइसोथर्मल हो गया, सॉरी ये वाला आपका अडायबेटिक हो गया, उल्टा लिख दिया मैं. इधर वाला आपका अडायबेटिक हो गया और ये वाला आपका आइसोथर्मल हो गया. तो आप देखो सेम प्रेशर डिफरेंसेस के बीच में जब ले जाते हैं, अडायबेटिक में वॉल्यूम का चेंज बस इतना होता है, जबकि आइसोथर्मल में वॉल्यूम का चेंज देखो कितना ज्यादा आता है. सो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट वॉल्यूम डिक्रीज इज मोर इन आइसोथर्मल दैन इन एन अडायबेटिक प्रोसेस फॉर द सेम डिक्रीज इन प्रेशर. ठीक है, काफी बच्चे ऑप्शन सी मार्क कर रहे हैं. कीर्तन ऑल्सो हैज गॉट सी. अनन्या पॉल एंड अंकित पॉल, पता नहीं एक बच्चे का आंसर सी आया है, दोनों का आंसर सी आया है. बट एनीवे, अडायबेटिक प्रोसेस गिवन बाय पीवी टू द पावर गामा इज अ कांस्टेंट. यस, दैट इज आल्सो करेक्ट. Assertion is both are true. Option B is correct. Both of them are true. Yes, it is B. It is not C. करेक्ट एक्सप्रेशन की बात नहीं थी यहां पे. करेक्ट एक्सप्रेशन आपका ये डायरेक्टली आप नहीं लिंक कर सकते. यहां पे अगर दिया रहता ऐसे बेसिस पे है, यू कैन स्टिल गो फॉर की स्लोप निकाल के. अगर अलग से स्टेटमेंट दिया रहता कि इट इज द स्लोप इज डिफरेंट, तब आप कर सकते हैं. लेकिन आप बोलोगे सर इसको डिफरेंशिएट करके भी स्लोप आएगा, बट दैट इज लाइक 2-3 लेयर्स ऑफ रीजनिंग लेटर. वैसे आप एक करेक्ट रीजनिंग नहीं बता सकते उसका. अगर डायरेक्टली यहाँ पे स्लोप दिया होता है dp by dv इज माइनस गामा टाइम्स p by v, तो हम बोल सकते थे कि हाँ ये रीजनिंग बिल्कुल सही है. बट इसके बाद हमें 1-2 स्टेप्स और फॉलो करने पड़ेंगे उसको लाने के लिए. सो वी कैन नॉट से दैट यस दिस इज द एब्सोल्युटली राइट रीजन फॉर इट. एंड एनीवेज इट इज नॉट मेंशन्ड इन द ऑप्शंस. दे आर जस्ट आस्किंग वेदर असर्शन इज ट्रू और फॉल्स, रीजन इज ट्रू और फॉल्स. सो वी कैन गो विद ऑप्शन बी हियर. एग्जैक्टली, है ना. ओके, पेपर में इंस्टेड ऑफ अडायबेटिक इट वाज आइसोथर्मल. अच्छा, आइसोथर्मल हुआ तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हुआ होगा. अगर आइसोथर्मल में पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट है तो दैट्स इनकरेक्ट, और अगर आइसोथर्मल में पीवी कांस्टेंट है देन दैट इज करेक्ट. ठीक है, आई होप दैट क्लियर्स थिंग्स. अगर अलग भी है तो भी अगेन आप जैसे बच्चे हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एग्जाम सेंटर से अब जितना याद रहता है उसके बेसिस पे हैव गॉट इट. As per this data, I guess the answer is correct, right? Yeah. इस As data per के this basis data, पे. it is correct. चलो अगले वाले पे So let's move on to the next question. यहां पे दिया हुआ है 2 planets है A and B and they are revolving around a massive star such that RA is equal to 2RB and MA is equal to 4√3 times of MB. तो दोनों सेंटर पे आपका एक ही स्टार है, सपोज सन है, कैपिटल M मास चिपकाते हैं उस पे. 2 प्लैनेट्स घूम रहे हैं A और B. A का रेडियस बड़ा है, A का रेडियस इज 2 times द रेडियस ऑफ B. यहां पे प्लैनेट B है, इस वाले में प्लैनेट A है. इवन मास ऑफ प्लैनेट A इज मोर देन मास ऑफ प्लैनेट B. ये वाला था क्या, ये इंटीजर में था क्या, ये इंटीजर में था बच्चों, ये बताओ मेरे को.
इंटीजर में था ये वाला, चलो हो सकता है इंटीजर में रहे ये, इंटीजर में अगर ये है देन आई फील इट वुड बी अ लिटिल मोर ट्रिकियर एंड 3 की जगह 2, 3 की जगह 2 था, 4 रूट था। हाँ वैसा कर देंगे तो इंटीजर बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेडियस √2 में जाता है ना। हाँ, तो √2 और √2 होकर वहां से कट जाएगा। तो maybe चलो वो कर सकते हैं, बच्चे बता रहे हैं ये 4√2 है, ठीक है सर उसी पे स्टिक करते हैं हम लोग, 4√2 पे जाते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलो इसका क्या करते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम क्या करेंगे, दिस इज अ मास मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ सर्टेन v स्पीड v, और ये स्पीड v क्या है, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है अगर ऑर्बिट पे घूम रहा है। तो आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया मास टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी टाइम्स द रेडियस r। अब रेडियस वगैरह की चर्चा की गई है, लेकिन एक चीज पे आप ध्यान दो, ऑर्बिटल वेलोसिटी के अंदर भी एक रेडियस ऑफ ऑर्बिट छुपा हुआ है। कैसे, इसके अंदर आपका आएगा m इंटू रूट ओवर ऑफ gm डिवाइडेड बाई स्मॉल r, और बाहर का तो r रहा एज इट इज। अब यहां पे इसको काटो, ये रूट r छोड़ा। एक और गलती काफी बच्चे आई थिंक माइट हैव मेड अ मिस्टेक कि ये मास को भी टू द पावर हाफ करके m टू द पावर 3/2 कर दे, बट बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ दिस कि ये वाला मास इज द मास ऑफ द प्लैनेट, जबकि ये वाला मास इज द मास ऑफ द सेंटर में जो भी सन है या जो भी है, ठीक है, सेंटर में जो भी है उसके बेसिस पे है ये। तो ओवर हियर दोनों बॉडीज के बीच में बस रेडियस और उस प्लैनेट के मास में फर्क पड़ता है, प्लैनेट ही है ना, हाँ प्लैनेट के मास पे फर्क पड़ता है। मतलब माई एल इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू r टू द पावर हाफ, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट, g कांस्टेंट, कैपिटल M कांस्टेंट। सो अगर मेरे को LA बाई LB चाहिए, या फिर LB बाई LA पूछा है, LB बाई LA पूछा है, चलो LB बाई LA पूछा है, LB बाई LA इज RB बाई RA पावर हाफ पे, और MB बाई MA लगेगा। RB बाई RA क्या है, 2, ठीक है, RB बाई RA इज 1/2। आई थिंक ये LA बाई LB था सर, वहां पे भी थोड़ा सा अलग है, 1/2 आएगा टू द पावर हाफ, और MB बाई MA करेंगे तो 1/4√2 निकलेगा। उसको करेंगे इवेंचुअली मेरा आएगा 1/4√2 इंटू √2, एक और 2 का दे देगा, आपका आएगा 1/8। आई एम अज्यूमिंग सवाल में अगर इंटीजर टाइप था, अगर इंटीजर टाइप था तब आपका यहां पे आता प्लैनेट A बाई प्लैनेट B, क्योंकि तब आपका आंसर आ जाएगा 8। क्या यही आ रहा था, 8 आंसर था, परफेक्ट। चलो 8 आंसर था, तो आई थिंक इट वाज LA बाई LB, यहीं पे कर देते हैं हम, LA बाई LB इज इक्वल टू 8 होगा इसका आंसर, ठीक है, गुड। कीर्तन 16√2 नहीं हो रहा है, आई थिंक कीर्तन आपने जहां पे गलती की है, आई फील आपने इस मास को मास ऑफ द प्लैनेट ले लिया, आप वो चेक कर लो आप, आई थिंक वहां पे √2 का एक फैक्टर और आ रहा है इसलिए, हो सकता है इसीलिए, एग्जैक्टली एक √2 का आ रहा है, इसीलिए आई बिलीव कि आपने उस मास को अलग ले लिया वहां पे। 8 इज करेक्ट। हाँ यू हैव टू रिमेंबर दिस ना सर कि ये कैपिटल M जो है वो सन का मास, स्टार का मास, स्टार का मास है, राइट। दैट इज ऑल्सो प्रीटी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट मेक दिस मिस्टेक कि इस कैपिटल M को भी स्मॉल m कंसीडर करके m टू द पावर 3/2 ले लेंगे। तो वही जब क्लास में भी ये बताया गया था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी प्लैनेट के ऊपर फर्क नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ जिसके अराउंड घूम रही है उसके मास पे फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अच्छा सर आप ये लोगे या मैं ले लूं? हाँ ये ले लेते हैं, लाइए, ठीक। सो आई विल टेक दिस क्वेश्चन नाउ। सो व्हाट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, दे आर सेइंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये तो सिंपल है यार, यूनिट पूछा है, फटाफट बता सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट सभी जानते हैं क्या होता है, ये होता है वेबर, राइट। देन मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ये होता है NIA। सो बेसिकली इसमें ये तो नंबर ऑफ टर्न्स है, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज करंट एंड दिस इज एरिया, राइट। So it is ampere and this is area which is meter square. So is any option matching? Ampere meter square, yes. So magnetic moment के लिए हो गया ampere meter square. So I should say if let me name this 1, 2, 3 and 4. If I name it, then first के लिए fourth correct है, second के लिए we'll go for third option. Now next is magnetizing intensity, right? Magnetizing intensity is what?
magnetizing intensity is basically Ni. Okay, right? This is number of turns per unit length. Number of turns per unit length. So N by L into I. If I say this will be ampere and this will be meter, right? So what will be the answer here? So unit wise, if you say, it will be ampere per meter. Okay, right? Ampere per meter. So ये कौन सा जा रहा है? Second one. So third के लिए correct option होगा ये second, ampere per meter. अब मैग्नेटिक फील्ड की वैसे तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है, राइट? बट अनदर यूनिट इज ऑल्सो देयर विच इज गॉस. सो वी कैन कनेक्ट दिस विथ गॉस. ओके, सो आई गेस दिस इज द करेक्ट answer, which is for first magnetic flux we'll have fourth option, for second one magnetic moment we have the third option correct, and for magnetizing intensity we have the second one correct, and for last one magnetic field we have the first one Gauss correct. Okay, 16 root 2 aa raha hai. Kirtan, just go and see the video once again how sir has solved it and you will understand it. Okay, okay, I guess we are on the chemistry questions now. The chemistry team is here and they will be discussing the chemistry questions. So madam, please welcome. Hello my dear students, how did you do today examination? Hello everyone. So first of all, first thing first, please tell me कि ये question आया था. Did it come in the exam, this question? Just to have a confirmation, then we can start with the explanation. This question is from chemical kinetics, first order kinetics, है ना? Did it How many come? have done this? Hello. Did it come? Yes, of course. Okay, then that's great. Then So fine. let's start over here for the question. A drug become ineffective when it decomposes to 50% of its concentration. They have already told us कि ये कब ineffective होगा. याद रखिए 50% of concentration पे ये ineffective हो जाएगा, क्योंकि question भी ineffective का ही है. If 16 mg of said drug becomes 4 mg in 12 months, 16 mg of drug become 4 mg 12 months में. Right? Find the time in which the drug become ineffective. Ineffective कब हो रहा था? खुद ही बताया आंसर, क्वेश्चन में ही आंसर बता रखा है आपको कि इनफेक्टिव कब होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन उसके हाफ हो जाएगी. राइट? हाफ कब हो जाएगी? 16 का हाफ क्या होता है? 8 mg. राइट? अगर 16 से 4 जाने में 12 मंथ्स लग रहे हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं 16 to 8 जाने में कितने मंथ्स लगेंगे? 6 months. Isn't it? So that means the correct answer is 6 months over here, right? Very, very easy question. A question, if you understand, अगर आपको simple English भी समझ में आती है, आप उसका आंसर very easily दे सकते हैं, The right? question itself given the answer. Yes, first line में ही आंसर दे दिया उन्होंने, isn't it? So let's look at the next question. Determine the type of oxide formed by the element which has the smallest size among the following. Smallest size. Now, sir can have this question. Yes, right? please. Yes. And among lithium and sodium, potassium, beryllium, boron and magnesium, you can see these elements, S block elements are the largest elements in the entire periodic table. You just say lithium is the group 1 element, and sodium is the group 1 element, and potassium again group alkali metal, beryllium is alkali earth metal, magnesium is again alkali earth metal, and it is going to be p block element, boron, and a subset chota wala hai, so that the smallest atom given series here boron. So boron electronic configuration, it is going to be 1s2, 2s2, 2p1, so it is going to be valency is 3. So as it is valency is 3, boron is going to form binary compound with oxygen, its valency is 3, so it is going to be B2O3 is going to be the formula of this compound. So let's say this compound element is given as A, the formula, generous formulas of this compound is going to be A2O3. How many of you done correct? So answer for this question is going to be option A is the correct answer for this question. So it is B2O3. How many of you done correct? Shravan Kumar, you deleted, you didn't do that? Oh, very good. So many students done well. That's the spirit. That's the spirit. आगे बढ़ो. Now here it is given which of the following gives
predominantly oxygen on electrolysis among the following when the oxygen is formed on electrolysis. So aqueous AgNO3 by using platinum electrodes, aqueous AgNO3 by giving Ag electrodes, concentrated H2SO4 platinum electrodes, dilute H2SO4 by using platinum electrode. In that case, when you take a silver electrode, it is an attacking electrode. So for this it is AO, okay. In my exam it is given AO, okay, it is given A2O3, right? It is going to be AO, no, it is going to be A2O3. Anyways, let's talk about silver is an attacking electrode. Coming to this topic, silver is an attacking electrode. When attacking electrode is there, anode is going to dissolve and cathode is going to be deposited. There is no that chemical changes happen. So only anode is going to be dissolved, oxidized, and cathode is going to be deposited. It's going to be the reduction process, so that this cannot be the answer. So let us eliminate it. So it's a simple question based on the electrolysis process given in the electrochemistry from the NCERT part 1 textbook grade 12. So stick on to the NCERT and we can do it. What happened? The concentrated H2SO4 by using a platinum electrode you have done. So whenever 50% concentrated means कम से कम 50% ले सकते हैं ना. So that you are going to use cathode में आपका हाइड्रोजन निकलेगा and anode में आपका H2S2O8 निकलेगा. So that is one chance, right? Now we can see when silver nitrate is done by using a platinum electrodes. So aqueous silver nitrate, it is going to give you silver plus and NO3 minus and H plus and OH minus. So of course NO3 minus cannot be oxidized at anode. So that OH is going to give you oxygen gas at anode. So therefore it could be the one of the probable answer. है ना बेटा? And also dilute H2SO4, you can see H2SO4 ionizes 2 gives rise H plus and SO4 minus, and water is also giving H plus and OH minus, and larger ions like nitrate, nitrite, sulfate, sulfite kind of ions never be deposited at anode, rather OH minus is going to be deposited at oxygen at anode. So the question आपको पूछ रहा है कि so which of the following gives predominantly oxygen on electrolysis? When oxygen on electrolysis मेरे को लग रहा है A is giving oxygen and D is given oxygen. Based on that, hello, you can see first, second, third as fourth option AD pakda. How many of you given the fourth option for this question? Just mention in the chat box. Fatafat. Yes, this particular JEE examination happened this afternoon is just on balanced with as compared to the morning session. B से निकल गया. Yes. रौनक पटेल. Okay. आगे बढ़ो और कुछ. Correct. Very good. You all done well. और एक क्वेश्चन है. Now, which of the following gives azo-dye test? It's an outstanding question from the amines at the end of the page of the amines chapter grade 12 NCERT textbook में इसका आंसर आप पकड़ सकते हैं. And total सारे के सारे questions, all the questions you are going to get proper solutions and proper hints from the NCERT textbook. So what I mean to say, so far what are the examination happened in the JEE mains as far as chemistry is concerned, definitely I am sure total NCERT related questions are only asked, mind it. And even for the further examinations, you just stick on to the NCERT, that advice I wanted to give you. Now let us say, which of the following give azo-dye test? Actually, azo-dye test is given by phenol and aniline. So let's talk about what is this azo-dye test. This is your benzene diazonium chloride
This is benzene diazonium chloride. When it is treated with aniline, so the hydrogen present at the para position of this aniline is going to be taken as HCl here, so that you are going to get the compound as N double bond N NH2. This is called para amino azobenzene. Para amino azobenzene. Whenever you are going to see nitrogen to nitrogen double bond, that is called azo group. And also you can say this is aniline yellow dye. Azo group is there in this dye, so it is called as azo dye test. So if it is with aniline, you can say it is yellow. If it is with a phenol, that is a orange dye. Mind it, the colors are also very important. How many of you done correct? So answer for this question is option A. Equation अलग नहीं है, equation दिया नहीं, equation में खुद बना हुआ. Aditya, right, fine. Okay, now let's talk about next upcoming question. Now it is going to be number of spectral lines in the fourth excited state of hydrogen atom. Number of spectral lines, dear children, if you see, this is a benzene diazonium chloride and this is aniline, and it is clearly given in the NCERT textbook, para amino azobenzene. You can just check with your NCERT textbook, it is clear. Okay, now number of spectral lines that is formed when the electron in the fourth excited state returns to the ground state from the hydrogen atom. So what is the meaning of fourth excited state? It is n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, and n is equal to 4, and n is equal to 5. So here n is equal to 1 is called ground state, it is a first excited state, and it is second excited state, and a third excited state, and it is a fourth excited state, right? Fourth excited state. And the fourth excited state means it is electron is coming from n is equal to 5 to n is equal to 1. So that we can say it is n2 value as 5 and n1 value is 1. So to calculate the maximum number of spectral lines, it is going to be fourth state, not fourth excited state, it is the fourth excited state. n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1 by 2. So n2 कितना पकड़ो? 5. So 5 minus 1. So 5 minus 1 plus 1. So by 2. So that is going to be 10 is the answer. So for this question, the answer is going to be C. Just mention how many of you done correct. So doesn't matter it is for the fourth excited state or the fourth state. You just clearly, I got the information from the memory based question, it is the fourth excited state. Yeah. So anyways, next question is on the way. So next question is all about mathematics. So your mathematics teacher is there. Welcome ma'am. Right. Take it. Hello students. We'll meet again with more number of questions. Thank you. ओके तो थोड़े मैथ क्वेश्चन करते हैं. तो अगर आपने ये क्वेश्चन किया है तो मुझे इसका आप आंसर भी बताओ, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे. उन्होंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और बताया है इसके जो है रियल रूट्स नहीं है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो कंडीशन पकड़नी पड़ेगी रियल रूट्स ना होने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. उन्होंने पूछा है रियल रूट्स नहीं होंगे इस इंटरवल में अल्फा कोमा बीटा में.
आपको निकालना है मॉड्यूलस ऑफ 4 इनसाइड द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो रियल रूट्स ना होना मतलब हमें चाहिए इमेजिनरी रूट्स, और उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो यहाँ पे देखो b क्या है हमारा a माइनस 5, बी स्क्वायर होगा a माइनस 5 होल स्क्वायर 4 इंटू a है हमारा 2 और जो c है हमारा वो है 15 माइनस 3a लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करो और आप a की जो है इंटरवल निकालो जिस इंटरवल में वो बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखो ये है आपका a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25 माइनस ये होगा 8 इंटू 15 यानी कि 120, ये होगा प्लस 4 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 24a स्ट्रिक्टली लेस देन 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये है a स्क्वायर, ये 24 माइनस 10a दैट मीन्स प्लस 14a और 25 माइनस 120 मीन्स माइनस 95 इक्वल टू 0। अब देखो हमें चाहिए दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 95 एडिशन 14, तो वो क्या होंगे, वो होंगे प्लस 19 एंड माइनस 5। इट शुड बी व्हाट लेस देन 0। अब आप साइन स्कीम बनाओ, साइन स्कीम से हमें इंटरवल मिल जाएगी। तो इंटरवल क्या मिलेगी, देखो ये माइनस 19 पे 0 होगा, ये 5 पे 0 होगा। तो जो दो नंबर है वो है माइनस 19 और प्लस 5। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे, निगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, निगेटिव वाली, मतलब हमारी इंटरवल ये है, ठीक है। तो हमारा जो अल्फा कोमा बीटा है वो है माइनस 19,5। तो अब आप निकालो 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा मॉडुलस के अंदर क्या होगा। तो ये होगा आपका 4 इनसाइड माइनस 19 प्लस 5 दैट मीन्स इट इज 4 इंटू माइनस 14। तो ये हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ माइनस 56 दैट मीन्स द आंसर इज 56। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका ये आंसर आ गया। यहाँ पे अगर दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपको पूछा था फुट ऑफ परपेंडिकुलर रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है एक लाइन का इक्वेशन और एक पॉइंट दिया है 1, -2, -1। आपको निकालना है फुट ऑफ ए परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन जो कि है अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, ठीक है। अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका अगर आंसर आया होगा तो प्लीज बताओ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका जो पॉइंट है वो है P ऑफ 1, -2, -1। परपेंडिकुलर ड्रॉप करो लाइन के ऊपर, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब लाइन क्या है, लाइन है आपकी x - 1/1 इक्वल टू y - 4/3 इज इक्वल टू z - 7/5। इसको लेते हैं लैम्डा। तो हमें क्यू मिल जाएगा, एनी रैंडम पॉइंट ऑन द लाइन, वो होगा x, y, z। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 4 एंड देन 5 लैम्डा प्लस 7। अब लाइन के इक्वेशन में हमें पता होता है दिस लाइन इज पैरेलल टू अ वेक्टर 1, 3, 5। तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो है पैरेलल टू वेक्टर b दैट मीन्स इट इज 1, 3, 5। अब देखो आपका जो वेक्टर पी क्यू है वो है परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो आपको क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पी क्यू एंड बी एज 0। अब हम निकालेंगे वेक्टर पी क्यू। तो ये क्या होगा, वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी। तो ये होगा लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 यानी कि लैम्डा, 3 लैम्डा प्लस 4 प्लस 2 यानी कि 3 लैम्डा प्लस 6। नेक्स्ट 5 लैम्डा प्लस 7 प्लस 1 मीन्स 5 लैम्डा प्लस 8। डॉट प्रोडक्ट विथ 1, 3, 5 इज 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा लैम्डा इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 6 मीन्स 9 लैम्डा प्लस 18 प्लस 5 इंटू 5 लैम्डा प्लस 8 सो इट इज 25 लैम्डा प्लस 40 इक्वल टू 0। और यहाँ से आपको मिलेगा 35 लैम्डा प्लस 58 इक्वल टू 0। और यहाँ से लैम्डा मिला, लैम्डा का है आपका -58/35। अब देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है आपका ये, और उन्होंने क्या दिया, ये जो है आपका ये है अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। आपको क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। तो आप निकालो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ही निकालो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा।
तो ये है आपका लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा, मीन्स कितना होगा 9 लैम्डा प्लस ये है आपका 1 प्लस 4 प्लस 7 मीन्स 7 प्लस 5 12। यहाँ पे वैल्यू रखूँ लैम्डा की, ये है 9 इनसाइड माइनस 58/35 प्लस 12, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये -102/35, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अगर दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लास है वो बशीर सर कंटिन्यू करेंगे मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को। Yeah, fine, ma'am. Thank you. Yeah, right. Yeah, dear students. So we've got few more questions. There are few more questions है. So देखते हैं dear students. The area bounded by the curves. You see, mod y is 1 minus x square plus y square is equal to 1. You see these two curves, dear students. The first one, y is equal to 1 minus x square डालो. X square will be this curve, minus x square will be down, 1 minus x square will be this curve, where you put y equal to 0 means x is plus or minus 1. This is 1, this is minus 1, right? The next, dear students, mod y in the sense for the same x you will get positive y, negative y. You will get the second curve also in the same way like this. This is going to be the first curve, dear students. है कि नहीं? Yeah. The next, dear students, x square plus y square plus 1 is a circle with center 0 0 radius 1. So you can take another color. So circle, so maybe like this, symmetry will be there. Yeah, maybe this is above or this is below, but one thing is sure, the area bounded is nothing but this area. There will be 4 such parts. Since it is a circle with radius 1, one area is pi r square by 4. This is pi by 4. The second area हम ये लग सकते हैं, integral 0 to 1, what is this curve? Y is 1 minus x square dx होता है. This is x minus x cube by 3 between the limits 0 to 1, 1 minus 1 by 3 is 2 by 3. So A part का area क्या होता है? Pi by 4 minus 2 by 3. There are 4 such by symmetry, dear students. अगर ये 4 होते हैं, you will get pi minus 8 by 3. This is given as alpha. Now you try to find 9 alpha, dear students. 9 alpha is 9 pi minus 24, right? If it is 9 pi minus 24, he said 9 alpha is beta pi plus gamma. Beta value is 9, gamma value is minus 24. So beta minus gamma will become, you can say 33. So the answer is going to be 33, dear students. Fine? Clear everyone? Clear? Fine? Next question. You see differential equation question hai. So this is LDE, integrating factor is e power integral p dx, tan x dx. So integral tan x is log mod secant x. So here the anyhow x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. This is log secant x. So that this becomes secant x. So differential equation ये होता है, dear students, I mean solution, y into integrating factor is integral of integrating factor secant x into 2 plus secant x by 1 plus 2 secant x whole square dx. You need to solve this, dear students. यहाँ पे देखिए, you just convert into, you just multiply with cos square x, you will get 2 cos x plus 1 by, if you multiply with cos square x, this you will get cos x plus 2 whole square dx, right? In this stage, dear students, you just divide with sin square x, you will get 2 cosecant x cot x plus cosecant square x by sin square x means you will get cot x plus 2, I have divided with 2 cosecant x whole square dx. Now you just take cot x plus, 2 cosecant x as t, cot x derivative minus cosecant square x
minus 2 cosecant x cot x. So multiply with minus, dear students. So you will get minus dt by 1 by t square. So 1 by t square in the sense minus 1 by t. So you will get minus 1 by this denominator. Finally, you are going to get, dear students, y secant x is nothing but, this is 1 by cot x plus 2 cosecant x plus c, dear students. Okay, अब देखते हैं, dear students. So you will get y secant x is equal to 1 by cot x plus 2 cosecant x plus c. So you can also write y secant x is equal to a cos x by sin x plus 2 by sin x plus c. So you just multiply with cos x, y is equal to sin x cos x by 2 plus cos x plus c into cos x. You just put f of pi by 3 root 3 by 10, you will get c value 0. So this is going to be y function, y of pi by 4, substitute sin pi by 4, 1 by root 2 into 1 by root 2 is 1 by 2 by 2 plus 1 by root 2, dear students. That is 1 by this, you will get 4 plus root 2, which is 4 minus root 2 by 2. This is the answer, or you can also say 2 minus 1 by root 2 is the answer. 2 minus 1 by root 2 is the answer. Clear, dear students? So solving this integral, we can say this integral is little different but standard only, but not that easy to get the idea in the exam, but you can do it, dear students. So convert into sin x cos x into 2, right? Next, dear students, you see this question, simple question है, logarithms question. X belongs to all natural numbers including 0, means whole numbers. You see this equation, y is equal to 2 by 5 whole power x. Sum of all values of y, where you see means sigma y you have to apply, x should be taken from 0 to infinity. That means 2 by 5 whole power x, sigma x runs from 0 to infinity. This is 1 plus 2 by 5 plus 2 by 5 whole square and so on. Infinite GP, my dear friends, a by 1 minus r, which is 1 by 3 by 5, and hence it is 5 by 3, dear students. A simple question. Okay, right? Right, dear students? Fine. Then meanwhile, dear students, you see, so all India test series by Infinity Learn. So it is just for 2,999 rupees. Get a 50% flat discount with the coupon code YouTube50 off. YouTube50 off. You just apply this code, dear students, you will get, and hereby we are going to give the questions related to, we analyze the 10 paper that we got in 2025 January session, and we will be giving updates very soon. So conclusions and all, and at the same time, dear students, so in this test series especially will include such kind of papers for the upcoming sessions, right, dear students? So thank you, and the physics ma'am continues discussing questions. Yes, sir. Wonderful question, ma'am. This is so beautiful. Yes. A, B, Y were numbers. Fine, fine. Please Yes. carry on. Yes. Right, dear students. Bye. Take care. Please, ma'am. Continue. ओके, तो ये हमारे पास एक फिजिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है. ओह भाई, आपको वॉइस के लिए माइक जरूरत है? हाँ, वॉइस तो मेरी काफ़ी लो है तो चाहिए होगा. तो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर किसी से सॉल्व हुआ है तो आप आंसर बताओ, आपका क्या आंसर आया है ना? काफ़ी इजी क्वेश्चन था, 1 मिनट के अंदर सॉल्व होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था. ओके बच्चे सभी बताओ, यहाँ पे एक्टिव रहो, आपका ऑप्शन क्या है ये बताओ. और जिन्होंने भी जेईई का आज पेपर दिया था, आप भी बताओ कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, सही किया नहीं किया, है ना? ठीक है, सही किया वो तो अभी हम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा. ओके, तो समन बोल रहे हैं कि ऑप्शन बी. ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. बाकी बच्चे, आदित्य तिवारी का आया ऑप्शन सी. ठीक है, ओके बी सी. ओके, अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं ना. ओके, हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं तो अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा. ओके ठीक है. ओके, काफ़ी बच्चों का बी आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं अभी. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले. तो द क्वेश्चन क्या दिया था? द ट्रूथ टेबल फॉर द लॉजिकल सर्किट शॉन बिलो इज. ओके, तो ये हमारे पास एक लॉजिक गेट दिया हुआ था. ओके, रोहित हमें बोल रहे हैं कि इसका ऑप्शन ए आया है.
ओके चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक एंड गेट है, ये और गेट है, ठीक है। ओके तो यहाँ से ये एक इनपुट जा रहा है ए, और ये वाला देखो जो सेकंड वाला जो इनपुट है ये बी, और यहाँ पे आके ये बी बार हो जाएगा। तो ये हुआ ए, ये हुआ बी बार, क्या हुआ, ये ए हुआ, ये बी बार हुआ। तो एंड गेट है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए बी बार, ठीक है। और जो सेकंड वाला दिया है यहाँ पे देखो, एक हमारे पास इनपुट है बी और एक हमारे पास है ए, और यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है तो ए का बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा ए बार इंटू बी। ओके तो यहाँ पे और गेट है तो ये आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ए और बी के जो भी वैल्यूज़ दे रखी है ये वैल्यूज़ को यहाँ पे रखो और देखो कि आउटपुट आपका कौन सा मैच हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी की 0 0 वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो वाई हमारा क्या आता है, अगर आपका ए भी 0 है बी भी 0 है तो 0 0 0 आएगा। तो देखो यहाँ पे आउटपुट 0 कहाँ पे है, यहाँ पे 1 आ रहा है तो ये तो नहीं होगा, तो 0 0 0 मतलब कि 3 ऑप्शन यहाँ पे 0 0 दिखा रहा है, ठीक है। तो अब ये काम करो 0 1 ले लो, सेकेंड वाला हम लेंगे ए की वैल्यू लेंगे 0 एंड बी की वैल्यू लेंगे 1। ओके तो ए की वैल्यू 0 तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस बी की वैल्यू 1 है, 0 का बार 1 हो जाएगा तो आउटपुट आना चाहिए 1। तो यहाँ पे देखो बी में 1 आ रहा है, सी में 1 आ रहा है, लेकिन डी में 0 आ रहा है तो ये हमारा कैंसिल हो चुका है। और यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 0, तो ऑप्शन ए भी हमारा कट हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है बी और सी, बी और सी में अभी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे 1 0 तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो थर्ड वाला चेक नहीं करना है, ठीक है। तो डी क्या है 1 1, तो दोनों इनपुट 1 1 है, तो ए की वैल्यू 1 रखो और बी की वैल्यू भी 1, तो दोनों 1 1 होगा तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास। सो 1 इंटू 0 का बार तो ये आउटपुट 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू बी बार यानी 0 तो 0 हो जाएगा। सो 0 आना चाहिए, सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि सी में देखो जब दोनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट हमारा 1 आ रहा है, तो 1 तो नहीं आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आइए सर। ओके मैडम इसको ना मैंने Yes, तो sir. मैंने क्लास में बच्चों को याद करवा दिया था ये क्वेश्चन, सो ये याद ही रख लो बेटर है, क्योंकि अगर एक बार जैसे मैम ने डिराइव करवा दिया कि ये ए बी बार प्लस ए बार बी है, राइट, ऐसे ही कुछ है, यस सर, है ना। तो ये बन जाता है जोर गेट, ये हो जाता है जोर गेट। और आई मेड ऑल द स्टूडेंट्स लर्न दिस फैक्ट दैट इन जोर गेट व्हेन द इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज 0, व्हेन द इनपुट्स आर सेम output is 0, inputs are same output is 0, inputs are different output is 1, so only B option matches। ओके फिर तो सर 30 सेकंड के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा, जैसे 30 seconds में हो गया है, but the fact is that you need to remember this thing, that if it is a XOR gate, first you need to identify that it is a XOR gate, then you need to remember the fact of XOR gate that if the inputs are same then only the output is 0, and if inputs are different then the output is 1। That is something you need to remember. If you do like that, then this question becomes very very easy, right? I guess one more question is there. Okay, students, AITS All India Test Series is there, and with a special discount this time. I would like you all to give yourself another chance if you feel that in session 1, attempt 1, you were not able to perform up to that mark which you were expecting. So this is an opportunity for you guys. Okay, go in the description section. Okay, all the information and details are given there. Please opt for the AITS All India Test Series from Infinity Learn. You will definitely get the edge here. So I guess let's move on to the next part. Okay, so one more question in physics, and this is a good question, right? So this question is from optics or geometrical optics rather we should say, right? So figure shows two spherical surfaces of radius capital R having common center, right? If the object is placed at O somewhere, okay, find the distance between the first images formed by both the surfaces. So one thing, see, this is I guess this is the last question of the day that we are discussing, or we will be discussing some more questions if we receive them, but I want all of you to solve this question along with me, and let's see what are we getting the same answers or not. What do you say? Will you solve it with me, everybody? Guys, are you there? So let's solve it together. Okay, so here if you see, for this particular case, right, so let's take refraction on this surface.
Okay, let's take refraction on this surface. So there are few rules which I'll tell you so that you, if you are here for the revision purpose also, I'll revise a little bit for you. Options were in decimals. Okay, so I'll match the options from here. The thing is, let's take this case first of all. So the incident radiation, incident ray will be like this, right? Incident ray will be in this direction. That means anything measured from here in this direction will be positive. Anything measured from here in the opposite direction to the direction of incident ray will be measured negative. So this is the basic of sign convention that we'll use in this particular question. So what do you say? Obviously here it will refract. I have just extended the line, but obviously here there will be refraction. Anyways, so let's start from this. Let's start from here. First of all, we will say U1 is, how much is this distance? It will be R by 2. This distance will be R by 2, right? So it will be minus R by 2, I'll put. Why? Because it is measured from this point in a direction opposite to the incident ray. Yes or no? Right? So minus R by 2. We are looking for V1 here. Now what is mu1 and what is mu2? How do we decide it, guys? कैसे decide करते हैं mu1 क्या है, mu2 क्या है? तो इसमें भी फिर से ट्रिक है. जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है वो मीडियम mu1 है. तो यहां पर ये हो गया एयर और इसके बाद रे ऑब्वियसली रिफ्रैक्ट होगी. ठीक है, जैसा भी रिफ्रैक्शन होना है टुवर्ड्स और अवे डिपेंड करेगा. तो उस रिफ्रैक्शन, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कहां है? वो सेकंड मीडियम में जा रही है. तो उस मीडियम को mu2 बोलेंगे जो कि यहां पर 1.5 या फिर 3/2 हो जाएगा. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Okay, Nitin, if I receive the question, I'll discuss it. Don't worry. Okay. So this is clear, everybody. Now we will say mu2 by V1 minus mu1 by U1 is equals to mu2 minus mu1 by R. Okay. Right now I am just writing R, but now when you put the values here, be very careful. What is mu2? Mu2 is 3/2 V1 minus 1 upon what is U1, guys? U1 is what? 1. U1 is what? Minus R by 2. So put it here, minus R by 2. Now mu2 is 3/2 minus 1 upon. Now remember, see, radius of curvature is measured in this direction from this point, right? This is our, let's say, pole. From this point we will measure opposite to the incident ray. That's why R will be taken negative. So no need to worry, you have to put here minus R. Is it clear? This is something which becomes really tricky in solving questions in optics. How is shift, guys? Okay, just wait for 5 more minutes, guys. Let me discuss this question. This is a really nice question, right? So let me discuss this and then we will also have a discussion about how was the shift, the comparative study and analysis. Everything will be here. Don't worry. Okay, so done. So shall we solve it? So this will be 3/2 V1. This will become plus 2 by R plus 2 by R and this will become how much? Minus 1 by 2R. Minus 1 by 2R. So 3/2 V1 is equal to minus 1 by 2R minus 2 by R. It will become minus 4 plus 1 is 5, right? So it is minus 5 by 2R. Minus 5 by 2R. From here you can say, sir, this 2 and this 2 will get cancelled and V1 would be minus 3 by 5R. Okay, so V1 would be minus 3 by 5R. Minus means it is again on this side. So I would say that if the object is here, that is 0.5R, okay, 0.5R, then the image is how much? 0.6. 3 by 5 is 0.6, so minus 0.6. So image is somewhere here, 0.6R. Is it clear? This is I1 and this is O. I hope it is clear, everybody. Aditya, answer D. I don't think so. Option D is correct. Still, let us solve together. You guys also keep on solving and let me know. Are you also getting the same answer? V1 minus 3R by 5. Is everybody getting the same answer? Minus 3R by 5. Let me know in the chat box. See, this is a little lengthy question, but it's worth solving, right?
Nitin, see, you can, our Telegram channel, you can send these questions, we'll pick them up and we'll solve it, no worries, okay? Minus 3r by 5 is coming? Yes, 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 okay. Right? Plano convex lens you are saying. So you cannot solve it with the help of lens here. Why? Because see, it will, first of all, it is not a thin lens. So the formula that we have is for thin lens and the object is inside the lens if you even consider it lens, right? अगर आप इसको लेंस मानते भी तो फिर लेंस के अंदर ही ऑब्जेक्ट रख गया ना, तो इसको हम रिफ्रैक्शनेट स्फेरिकल सरफेस से ही सॉल्व करेंगे. चलिए, तो यहां पर छोड़ते हैं I1 को. अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पर. I2 के लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, सो बेयर विथ इट, है ना, बट अगेन आई एम सेइंग वर्थ इट. ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर अप होंगे. ये सेंटर था, ये ऑब्जेक्ट था, सो अब ये डिस्टेंस कितना हो गया? 3r/2. ठीक है. अब अगेन सेम कहानी यहां से रिपीट होगी. आप बोलोगे सर इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, ठीक है, तो अगेन एनीथिंग मेजर्ड ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे विल बी टेकन नेगेटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल बी टेकन पॉजिटिव. सो यू विल सिंपली से हियर, sir, this time u2 would be minus 3r/2. Same thing. v2 we need to find out. What is mu1? The medium of incident rays, that is 1. What is mu2? Refractive index of the medium of refracted rays, that is 1.5, rather 3/2. Now let's use the formula. Mu2 by v2 minus mu1 by u2 is equals to mu2 minus mu1 upon r. Now let's put the values. Mu2 is 3/2, v2 minus mu1 is how much? 1 upon u2 is how much? Minus 3r/2 is equals to, r is again minus r. Why minus again? Same thing, students, because it will be measured in this direction. R is measured in this direction, so we have to take it negative. Clear everyone? Okay, now let's do this mathematics here. It's very simple. We will say 3/2 v2 plus 2/3r plus 2/3r is equal to how much it is? Minus 1/2r, minus 1/2r. So you will say, sir, 3/2 v2 is equal to minus 2/3r minus 1/2r. So it will be minus 7/6r is equals to 3/2 v2. So v2 would be minus 9r/7. Is it clear? Yes? Yeah. Okay, fine. Yeah. But I guess it will be, I will be able to solve in this slide only. Thank you for adding one more empty slide. Anyways, let's come back to the question. Sir, it's r/2 distance from one end of the refractive glass. हाँ ना, तो r/2 लिया ना मैंने, इस एंड से ये डिस्टेंस r/2 है, ठीक है. जब दूसरा रिफ्रैक्शन कंसीडर करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r plus r/2, 3r/2. That is what I have considered, right? That is what I have considered here, na? So that is why u2 is minus 3r/2. u2 is actually minus times r plus r/2. Clear everyone? देखो अभी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, है ना? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे पेपर में ये क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है काम का है. नितिन, मैं बोल रहा हूं बेटा, आप ऑप्शन, आप क्वेश्चंस भेज दीजिए टेलीग्राम चैनल पे हमारे, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल का लिंक है क्या डिस्क्रिप्शन में? Yes, so we have the link of the Telegram channel in the description. You send the question here if you have. We'll come and immediately discuss the question. No worries, okay? So far, whatever questions we have received, we are discussing that. Anyways, let's come back to the question. So V2 is this. Now let's measure from this point only. Okay, let's measure from this point only. Now see, where is object number 1? You will say, sir, V1, sorry, I would say I1. This is I1 here. What is this distance? This distance, let's say it is x1, which is 2r minus how much? 3r/5. 3r/5. How much it is? 7r/5, I guess. 3r/5, it is 7r/5. Okay, so this is x1, right?
So up to this point we have x1. Now I2 is formed here. How much is this distance? Just now we have found out it is 9r by 7. So it is 9r by 7, right? So what is the gap between them? That is what they are asking. They are asking this gap. So this gap would be 7r by 5 minus 9r by 7. 49 minus 45, that is 4r by 35. Okay, this is the answer. Is it matching with any option? Aditya, I guess it is not matching with option D. It must be matching with option A here, 4r by 35. ठीक है? तो आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी एक बार अच्छे से समझ सकते हो मैंने क्या लिखा है. मैं थोड़ा हट जाता हूँ स्क्रीन के सामने से, सो दैट यू कैन हैव अ फुल व्यू ऑफ द स्क्रीन, राइट, व्हाट आई हैव डन. एंड ऑल्सो राइट, इसका भी बता देता हूँ फुल व्यू कितना है. ये आपका फुल व्यू है ना. तो आप ये दोनों स्लाइड्स यूज करिए, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए, समझिए, एंड इट विल रियली क्लियर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. इसमें μ1 क्या लेना है, μ2 क्या लेना है, एंड ऑल दोस थिंग्स. आई गेस नाउ okay, so we have the analysis, memory based questions analysis, and I would like to welcome Suresh sir here. Okay, so Hi students, yes, how did you do today examination? So फटाफट chat box में mention करना. And this is the memory based questions analysis, and we have various chapters, and especially in this January session what I found, all the questions are exactly related to the NCERT, and every question is from NCERT itself, especially for today morning session and evening session. You can see the total weightage of this chapter wise, and how much percentage is given. Some basic concepts of chemistry, it is given 4.5%, which included kind of stoichiometric calculations like empirical formula and molecular formula, and kind of concentration terms analysis is concerned. And structure of yes, atom. one second, yes, sir. Yeah. Yes, busting happy. I got your point that options were in decimals, so it's no problem. See, if options were in decimal, you pick this up. 4r by 35 will become 0.114r, right? 0.114r. So you can match whatever the options were there, but the important point is that this is the method to solve the question. The concept, the method, this is more important, and this is the answer that we are getting. Now options were in decimals is a different thing. Okay, according to this you can find out what decimal it is coming out to. It, I guess this is coming out to be 0.114 something times r. Okay, okay, so let's come back to the, sorry sir, let's come back to the discussion. Yeah. Yes. So when it comes to the structure of atom, it is coming one question, number of spectral lines that is coming from fourth excited state to the ground state. A short while ago I only discussed that question in this session, right? And you got redox reactions 2.5%. You can see chemical equilibrium 1.67% and ionic equilibrium 1.5%. And also you can see solutions and the colligative properties, which of the following has more boiling point, which of the following has one half factor के हिसाब से एक question पूछा गया, and it is 2.5%. And you can see thermodynamics 3.67, graphite diamond question is given, it is from thermochemistry calculations, right? So paper is definitely, it is moderate. You don't say it is so difficult, and it is not so easy, and it is balanced, well balanced paper in this January total sessions. In the previous week we could see a paper is relatively easy, and yesterday and today it is moderate. Some questions are little bit thinking oriented questions, and some questions are little difficult as well. Yes, you got see electrochemistry 5.17, and a short while ago I discussed the question based on the products that is formed at anode at Ag-NO3 by using platinum electrode, Ag-NO3 by using silver electrode. So it is completely based on the electrolysis, and today morning the same concept is being asked at Faraday's laws of electrolysis, right? And you can say p block elements, you got 5.67. Boron has B2O3 molecular formula. Boron has B2O3 molecular formula, and based on this you can say a one question D and F block elements, colored ion, paramagnetic, and you have various questions based on pyrrolysite and sodium chromate,
and coordination compounds. At the last we got a question like the yellow color complex which has a magnetic moment is spin only magnetic moment. The answer is supposed to be 0. Yes, Anand. And salt analysis and basic of organic chemistry. And every JEE mains examination, one question is being asked based on the stability of carbocation. Stability of carbocation, right? And you can see hydrocarbons, alkenes, one question is there, and alkynes we got a question, and also haloalkanes and haloarenes, and alcohols and phenols and ethers, and combination of these last two, a question is being given, right? And moving ahead, chemical kinetics and nuclear chemistry, Anjali ma'am has discussed about a question, a drug is going to be ineffective if it is decomposed 50%, right? Answer is supposed to be 6. The question is based on this chemical kinetics, first order kinetics, right? And you can see surface chemistry is not that okay, periodic table and periodicity, and based on that you have which of the following is the smallest element and its oxide formula. A2O3 got the answer, right? Booster test series is also there, na? Yeah, it is allowed for the online student also. And chemical bonding, molecular structure, hybridization, and shapes of molecules, and bonding electron, antibond, non-bonding electron, NO2 minus non-bonding electron का वजह से question पूछा गया, and 8.17, and S block elements, and aldehydes and ketones and carboxylic acids. You have various questions based on 2 questions can be seen, and compounds containing nitrogen, and azodite test. So azodite test is going to give a compound with aniline. So para amino azobenzene is the structure you got in the yellow dye. It is based on that compound. Biomolecules, essential amino acids and non-essential amino acids is being given, and the chemistry in everyday life and practical organic chemistry. Barium sulfate, a percentage of barium question has been asked based on this. So this is the last 9 shift chemistry analysis in 2025. So all chapters are well balanced, and it is completely purely NCERT based, and I think you all done well in this January shift. Okay, for your betterment, still you are able to write the second shift as well. And for that, I just want to give you a small advice: stick on to the NCERT and expect the question moderately well. Henam? Yes, sir. And sir, I guess please now take care. we have. So it's very useful advice, sir, that NCERT is the key. NCERT is very important in at least chemistry. Okay. So now let's come to the physics discussion, or the analysis rather I should say. So here units and so percentage, you can see I won't discuss the percentages, but I'll discuss the questions that are important, the concepts which are important. So it is very much clear that units and measurement, every session one question is definitely coming, and this is very important. And in fact today there 2 sessions came, two questions came in today's evening shift. One was based on the dimensional analysis of few quantities, and another was based on what? The units, directly the units of different physical quantities, and the quantities are mainly from the 12th topics: magnetic field, magnetic intensity, magnetizing intensity, magnetic flux, magnetic moment. And I particularly tell these things in class that see, these units are very close to each other, so no need to forget them. So remember their formulae very clearly, है ना? Yes, errors भी था, yes, errors भी था. तो देखो measurement, units, dimensions, errors सब आ रहा है. तो पहला चैप्टर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करना ही करना है. तो नेक्स्ट शिफ्ट के प्रिपरेशन के लिए यू मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. हाँ, नेक्स्ट आता है वेक्टर अलजेब्रा. तो वेक्टर अलजेब्रा में से आज एक क्वेश्चन था, बट उसको मैं कहूंगा नहीं कि डायरेक्टली वेक्टर अलजेब्रा से था. ऑब्वियसली वेक्टर तो यूज होता ही है सारे कॉन्सेप्ट्स में, राइट, फिजिक्स में. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं. अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से जो क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिकली वो ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस, राइट, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस हैं. तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में बहुत ध्यान से पढ़ना हमको. ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं. फिर ऐसे मोशन इन अ प्लेन में भी अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे छोड़ने के बाद हाइट का रेशो क्या होगा. These kind of questions are coming, which are like on fingertips. You have these topics, right? So this time instruments were not from the unit, right? Yes.
Okay, then circular motion, laws of motion mainly questions are coming from friction. Work per energy question was there today. Okay, one object was one pendulum was hanging at some height at an angle of 60 degree, and then it comes and collides with another particle. So energy conservation, or you can say work energy theorem, both can be used in that question. Then obviously the concept of collision got involved in that single question only. So in mechanics, one thing is there that concepts are being mixed, right? So I cannot say particularly this question belongs to only work per energy chapter, because it involved the concept of collision also, so it comes under this category as well, right? And then rotational motion तो बता चुका हूँ भाई, इंक्लाइन प्लेन से जो ऑब्जेक्ट को गिराते हो उसमें, या रोलिंग मोशन में उसकी एनर्जी का रेशो, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्पेशली फ्लक्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, फ्लक्स के, पोटेंशियल एनर्जी के, राइट. एंड एक चैप्टर यहाँ पे मिस हो गया शायद, या नेक्स्ट में, हाँ, ग्रेविटेशन. चलो नेक्स्ट स्लाइड में है. ग्रेविटेशन से डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा है यार, चाहे वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो, है ना. अच्छा, बॉम्ब भी आया था तो वो मोमेंटम कंजर्वेशन में आ गया, है ना. तो अब हम जैसे देखें तो यहाँ 11th के टॉपिक्स कर लेते हैं पहले. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन था एक, वो कल था या सुबह था शायद, तो एक बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन था. उसके अलावा भी आज हमारे पास आई गेस यंग्स मॉडुलस की यूनिट का एक पार्ट आ गया था इसमें से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. थर्मोडायनेमिक्स में से डायरेक्टली ग्राफिकल कंपैरिजन बिटवीन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस आ गया, ये की बहुत इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट मेरे नोट्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, आप सभी ने पढ़ा है जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे. सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगेन हमारे पास फिर से ओमेगा का कंपैरिजन आ गया. वेव्स में से थोड़ा, वेव्स में से क्वेश्चन कम रहे हैं इस बार, ये देखने को मिला है. और वेव्स में अगर क्वेश्चन आता भी है तो आई गेस ये ऑर्गन पाइप का ही क्वेश्चन रहा है ना. सो ऑर्गन पाइप्स के ही क्वेश्चन मेनली आए, तो आप उसमें स्टेशनरी वेव इन ऑर्गन पाइप्स पार्ट थोड़ा पढ़ सकते हो. ग्रेविटेशन डेफिनेटली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग इन ग्रेविटेशन फ्रॉम द ऑर्बिटल स्पीड, द एस्केप स्पीड, राइट, द एंगुलर मोमेंटम एंड ऑल दोस थिंग्स. हाँ, एसएचएम इजी था आदित्य. नाउ आज के पेपर में करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन रहे, कैपेसिटर से चार्ज वाला क्वेश्चन रहा, आपने देखा होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन था, राइट. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं कि वायर है, वायर के आसपास थोड़ा अरेंजमेंट ऑफ वायर्स और उसमें मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली उन्होंने, राइट. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से तो आज शायद क्वेश्चन नहीं था, बट फिर भी इसमें आप ज्यादा पढ़ने को कुछ है नहीं, छोटी मोटी चीजें वो पढ़ सकते हो, ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, देयर फॉर्मूले एंड ऑल. फिर ईएमआई से क्वेश्चन आई गेस ये भी आज मुझे देखने को नहीं मिला अभी तक, तो क्वेश्चंस में शायद किसी क्वेश्चन के साथ मिक्स्ड कॉन्सेप्ट में डिस्कशन था इसका, राइट. ऑल्टरनेटिंग करंट डेफिनेटली क्वेश्चंस आर कमिंग, स्पेशली रेजोनेंस. ऑल्टरनेटिंग करंट में ना रेजोनेंस के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रेजोनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल्टरनेटिंग करंट. फिर ईएम वेव्स, जैसा कि मैं पहले भी क्लास में भी बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, ईएम वेव्स में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ स्पीड इज गिवन और वेलोसिटी इज गिवन रादर, राइट. देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो रिलेशनशिप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन्फिनिटी लर्न महाराष्ट्र अभय नगर में है क्या? इन्फिनिटी लर्न वैसे तो सब जगह है, हालांकि इट इज ओपनिंग मेनी ब्रांचेस, सो यू कैन लुक अप ऑन द वेबसाइट एंड यू विल गेट टू नो वेयर इट इज. एंड इन्फिनिटी लर्न इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इट्स अवेलेबल फॉर एवरीबडी. यू कैन जॉइन द टेस्ट सीरीज एंड द कमिंग booster batches and everything. So all the information is given there in the description below. And then we come to geometrical optics. तो आज भर भर के आए क्वेश्चंस, और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए. बहुत कम पॉसिबिलिटी लग रही थी हमको कि जो स्फेरिकल सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन, ये कम आते थे अभी तक, बट आज आ गया और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आया, राइट. वेव ऑप्टिक्स से थोड़ा कम क्वेश्चन देखने को मिले आज के सेशंस पे, बट वाईडीएसई से क्वेश्चन जनरली पूछे गए. आज इस बार डिफ्रैक्शन थोड़ा कम मिला है. लास्ट ईयर मैंने देखा था डिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस थे काफी, इस साल डिफ्रैक्शन बहुत कम हो गया है, बिल्कुल ना के बराबर. एटम्स न्यूक्लियाई से डेफिनेटली क्वेश्चंस आ ही रहे हैं. आइंस्टीन्स इक्वेशन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उससे आ रहे हैं. डी ब्रॉगली वेवलेंथ से क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट. एंड सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं. लॉजिकल गेट्स के ज्यादातर क्वेश्चन है, राइट. लॉजिकल गेट्स के क्वेश्चंस आर कमिंग, सो लॉजिक गेट्स अच्छे से कर लो. अदर देन दैट जेनर डायोड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट पीएन जंक्शन से या उससे ज्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चंस इस बार देखने को नहीं मिले. तो लॉजिक गेट्स के मोर क्वेश्चंस वर ऑन लॉजिक गेट्स एंड देन लिटिल बिट क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम जेनर डायोड एज वेल. So this is all from our side in physics analysis, I guess. And in mathematics, I'll show you here. Yes, so you can see this in mathematics, sets and relations, and particularly sequence and series is
इट हैज गॉट अ हाई वेटेज, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन आ ही रहे है ना। फिर मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का तो हर एक क्वेश्चन हर एक पेपर में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 4 बॉयज 5 गर्ल्स या 5 बॉयज 4 गर्ल्स वाला क्वेश्चन तो काफी सेशंस में आया है, राइट। सो प्रोबेबिलिटी भी काफी है, तो प्रोबेबिलिटी के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है मैथमेटिक्स में। एंड द क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स एज एवरीबॉडी नोज आर लिटिल स्लाइटली लेंदी, आई शुड से ना, थोड़े से लेंदी है, तो ज्यादा प्रैक्टिस करना है हमको, मैथ्स पे भी ध्यान देना है। जिन बच्चों को लगता है कि इस बार उनके फिजिक्स केमिस्ट्री में तो नंबर ठीक आ गए बट मैथमेटिक्स में नहीं आए थे, तो दम लगा के सेशन 2 में मैथमेटिक्स को इंप्रूव करो, है ना, वो आपकी रैंक डिसाइड करेगा, इट विल बी अ रैंक डिसाइडिंग फैक्टर, राइट। सो अकॉर्डिंगली यू कैन से कोनिक सेक्शंस में से यहाँ पर थोड़ा सर्कल्स के क्वेश्चन ज्यादा है, पैराबोला एलिप्स के कम रहे कोनिक सेक्शंस में। बाकी हमारे पास कैलकुलस से क्वेश्चंस हैं, फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। एंड अच्छा खासा वेटेज डेफिनेट इंटीग्रेशन का डेफिनेटली हमेशा वेटेज ज्यादा रहता है, जो कि अभी भी यहाँ दिख रहा है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस हैं और आते रहेंगे, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशंस का भी वेटेज रहता है, 3D ज्योमेट्री और वेक्टर्स, इसका भी वेटेज अच्छा खासा यहाँ पे दिख रहा है। So you have solved questions and mathematics teacher will come and he'll do a detailed analysis of this. But so far you can see these topics are mainly important in mathematics, as vector algebra, 3D geometry, then you come to differential equations, definite integration, right? And trigonometric ratios and equations में से question आता है तो बनता है या तो बनता है तो बिल्कुल उसमें जूझने की जरूरत नहीं है, right? So this is very good. Application of derivatives obviously. तो calculus 12th का मेजर पार्ट है और कैलकुलस हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है क्वेश्चन, तो मिक्स्ड क्वेश्चंस रहते हैं कैलकुलस में। ओके, सो आई गेस दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन एंड स्टूडेंट्स आई वुड रियली लाइक टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। जिन भी बच्चों का सेशन 1 अच्छा गया है, ओके, बहुत अच्छा गया है, फिर भी जब तक रिजल्ट नहीं आता आपका, आप सेशन 2 की प्रिपरेशन ही करिए, एडवांस की प्रिपरेशन को अभी टच नहीं करिए। Okay, after the result comes and you are satisfied with your percentile, then only move on to the advanced preparation. जो स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारा इस बार पेपर अच्छा नहीं गया है, प्लीज डिसहार्टन मत हो, होता है, ठीक है। आपने जो भी गलतियां करी उनसे सीखो। देखो, एक बहुत अच्छी चीज मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल। हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आया हमारे सामने, वी सी अ क्वेश्चन एंड वो हमसे गलत हो गया, राइट, हमसे कुछ गलती हो गई, इस क्वेश्चन में नहीं बना, ओके, तो हमारे दिमाग में 2 ही थॉट आएंगे। पहला थॉट क्या आएगा, यार मैंने साल भर पढ़ाई करी और अभी भी ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, राइट, यही आएगा ना, इतनी सिली मिस्टेक कैसे हो गई, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट इट इज नॉट रेडियस, इट इज डायमीटर आस्क्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Everybody will have this thought, oh God, I have made such a silly mistake even after studying so much, I'm no good, okay, I'm good for nothing। तो इस टाइप का थॉट आए, एक पॉसिबिलिटी है। तो ये ना आपका जो क्या बोलते हैं हम इसको, आपका कॉन्फिडेंस है कॉन्फिडेंस गिर जाएगा आपका। आप बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंस पे काम करोगे तो बात बनेगी नहीं, कितना भी टैलेंट हो, कितनी भी प्रिपरेशन हो, कॉन्फिडेंस गिर गया तो काम खत्म, पूरा महल गिर जाएगा आपका। सेकेंड पॉइंट आप ये रख सकते हो दिमाग में, अगर मान लो आप एग्जाम से पहले कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो और आपसे गलतियां हुई, तो यू कैन बी ग्रेटफुल, यार थैंक गॉड ये क्वेश्चन अभी गलत हो गया, एग्जाम में नहीं होगा, अभी गलती होगी तो अभी से सीख लो, जो भी गलती हो रही है उससे सीखते जाओ। सो मेक दिस लर्निंग एटीट्यूड। तो जिन जिन बच्चों का सेशन 1 अच्छा नहीं गया है या कुछ कारण से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, आई नो यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड वेरी हार्ड, ओके, बट अच्छा नहीं कर पाए हैं, प्लीज इस एटीट्यूड से जाओ कि लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द मिस्टेक्स दैट वी हैव कमिटेड, सो दैट वी नो दीज मिस्टेक्स शुड नॉट बी डन while giving the second attempt. Okay, cutoff, Aditya, I would not like to comment anything on this. Okay, let's wait for the result. It is very important because अभी आपको भी clearly नहीं पता कि आपके कितने marks आ रहे हैं, है ना, because you don't have the question paper with you right now. So let's just wait for the result. Till then, chill and just prepare for second attempt with a very nice learning attitude and being grateful towards whatever mistakes you are committing. ठीक है, थैंक गॉड ये मिस्टेक्स अभी हो गई, एग्जाम में नहीं होंगी। ये एटीट्यूड आप फॉलो करके देखो, इसमें इट विल गिव यू अ सब्सटैंशियल शिफ्ट इन योर प्रिपरेशन, यू सी इट। ओके, एनीवेज, सो with this statement I would like to close this session today. And student, it has been a very nice journey of these days in which we have discussed 10 sessions of JEE Main, right? 10 sessions approximately, right? We have discussed, sir? Yes, 10 sessions we have discussed. It has been wonderful with you.
Please continue your preparation, and if you want to continue your preparation with us, then in the description below you have all the links for the Success Booster batch. You have the links for the All India Test Series. If you want, you can join the test series with us. We'll have the discussion of the papers, and if you want, you can come in our batches where we'll be directly teaching you all these concepts and preparing you for the next attempt. Okay students, so subscribe to our channel, like this video, and thank you so much. So all the best and see you all.